Question number 101, Sri Kalanidhi Veerasamy. माननीय मंत्री जी. Sir, a statement is laid on the table of the House. Honorable member. Sir, the country has a problem where there is unemployment and huge amount of income disparities, sir. We talk about below poverty line families where the total income of a family is only around 30,000 rupees annually. And when we are talking about this, we are selling gas cylinders for 1,000 rupees. And even if you consider the 200 rupees subsidy which is being given, it's about 9,600 rupees, sir. For a family which is earning 30,000 rupees, we talk about the below poverty line families. You are claiming that we are giving gas for so many crores of people. I would like to know, like income tax. Income tax, you have slabs where you say that up to 7 lakhs, we are not going to charge you any income tax. Honorable member, or Sir, question. Sir, question is coming, sir. So I am asking, can you consider giving subsidy for LPG at a much better rate for these BPL families, where it can be given at probably 200 rupees per cylinder for the BPL families, and maybe at a higher rate for higher income Okay, groups? Mantri ji. Thank you. Honorable Speaker, sir, I want to, with your permission, draw the attention of the honorable member to the fact that it was precisely because the capacity to pay for families which are termed as BPL or below poverty line that the Ujjwala scheme was introduced. The Ujjwala scheme, sir, when it was introduced, initially it had 8 crore connections, and these 8 crore connections were provided a good 7 or 8 months before the time. We reissued another 1 crore 60 lakh cylinders under the Ujjwala scheme, where the lady member of the household is presented free of cost a cooking top and a cylinder. Now, during the course of the pandemic, sir, when economic activity had come to a grinding halt at one stage, and then it was slow, and the families who are in the below poverty line categorization were the most severely affected, the government gave 3 cylinders free of cost to those BPL families. Sir, insofar as prices are concerned, I should like to submit through you, sir, to the House that we import 60% or thereabouts, perhaps even more sometimes, of our requirements. We have to import them. The import price, sir, is linked to what is called the Saudi CP or the Saudi contract price. And the interesting thing is that the Saudi contract price during the last 2 years or so, if we have to use this as a reference period, sir, it has gone up from 250 per metric tons per $250 per metric ton to something like $900 per metric ton. Today also, I think it is around $751 per metric ton. Now, if your import bill is determined by the international price, then it is very interesting to analyze what the government did. Because the government is sensitive to the requirements, sir, of the consuming population, particularly, as the honorable member says, to the most vulnerable, we did not allow the cost of domestic LPG to increase. Saudi contract price, sir, went up 333%, and yet the price increase was very small for the domestic thing. In May 2022, precisely as the honorable member states, we introduced a 200... माननीय मंत्री जी, संक्षिप्त में. Sir, I would like to complete this. आपको इजाजत नहीं दी, आप इनका जवाब मत दिया करें. 200 एक बात सुन लें, प्लीज बैठें. प्लीज बैठे मंत्री. कोई भी माननीय मंत्रीगण नीचे बैठे कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो आप उसका जवाब मत दिया करें. ये लाइन आपको कहीं दे दिया, लेकिन आप उन पर बहस करना चाहते हैं. उनसे तो
सर बहस करना मैं कौन होता हूँ, बहस से इतने विद्वान है, हाँ, लेकिन आप चर्चाएं मत करो। है, तो मैं कौन होता हूँ? मैं जिनको अलाउ करूं उनका जवाब दो आप। Sir, I want to conclude this, that at the end of the day, sir, at a time when the Honorable Prime Minister was providing 3 free meals, dry rations, to a very large segment of our population, even at that stage, we did not allow the price of domestic LPG to go up. Now, at the end of the day, that 200 rupees subsidy, what is a subsidy? It is taxpayers' money. And as the Honorable Member says, the ones who are most vulnerable, we are always ready. Left to this House and the Honorable Prime Minister, it would be ideal if the international or the Saudi contract price could come down from 750 further down. It would enable domestic LPG to be sold at even more economical rates. So I wish to submit this in response to what the Honorable MP has said, and I always stand ready to be able to, I would also be able to provide further Honorable details Member to all this. Sir. Supplementary. Thank you, sir. Sir, I was only trying to reiterate that 33% of a family's income goes towards gas is probably not acceptable, and how it can be alleviated. My next question is, what is the status of your investment in Mozambique, sir, where there is a huge project which is taken by Total, and there are some unrests over there, and if that happens, probably gas can be made a lot more cheaper in India. So I would like to know what is the status of the project which is happening in Mozambique. Sir, I want to thank the Honorable Member. It is my understanding that at least the context that I have set out and the international situation. Sir, as part of the many initiatives which have been taken during the last several years, import of gas, acquisition of assets outside, increasing domestic production of gas. Sir, I'd like to inform the Honorable Member through you, sir, that last year our domestic production went up by 18%. This year also it's going up 18%. But for an economy which is thriving, where the rate of growth is 6.5% and 7%, where our growth rate, sir, is 3 times the global average. So we have a situation, the more demand for energy is arising on a daily basis. Insofar as the investment in Mozambique is concerned, sir, the Honorable Member has referred to unrest. Sir, there is an issue there. We are in partnership with an international group of companies. He mentioned one of them. And there are local conditions which are of, I would say, I would perhaps call it unrest is too mild a term, but there are issues of dealing with a form of insurgency there. We are in touch with these people, and the project is under what is called force majeure. And the $6 billion investment by Indian companies, we are very confident that due to the negotiations we're having both with government parties and the others, people taking on responsibility, we will find a way and to navigate through this problem so that gas, not only from Mozambique, but from several other sources where we are getting gas from. And at the end of the day, the international price is determined by a variety of factors. And, you know, one of the analysis I read, sir, was in a few years' time, this will be all a thing of the past because there will be so much gas available. But we have to navigate the next 2 or 3 years through the kind of global situation as it exists today and as it is evolving. Thank you, sir. Srimati Supriya Sule. Sir, I would just like to ask the Honorable Minister, I appreciate you saying that for Atmanirbhar Bharat in 9 years you've managed to increase, but you're still at 60%. So from where did you start to bring it to this 20%, which you said you increased it by 16 and 16? So the domestic, if you could clarify. And my second limit, it's a question is, I mean, in the international process, what you mentioned, we've had a slight conflict with our various relationships because of the amount of oil and gas that we're getting from Russia. So that was a big benefit, and that's what came in the media. So why is that benefit of the oil cost not given to the consumer? So if you had made that agreement with Russia, which has come in the newspapers, and we have strained our other relations worldwide, including with America. So how does this balance work, and why is the common man not getting the cylinder cheaper if you think you've done such a good intervention? Honorable Speaker, sir, I think I should start by saying
that precisely because the government wants to insulate our domestic consumer from the volatility which results on account of the international prices, we took a number of steps. First of all, if you look at the scale, in 2014, sir, we had 14 crore connections, gas connections. That has risen to 31 crore or more than that. Today, apart from the 31 crore connections, several other things have happened. Our gas pipeline, which was at something like 14,000 kilometers in 2014, we are taking it to 33,500 kilometers. That is a target. We are already at 23,500 kilometers. Our domestic production, I mentioned, has gone up 18% last year and 18% this year. But we still have to, after that increase in production, import 60%. Now the issue, sir, here is oil marketing companies have not increased the price. They took a massive loss, huge losses on account of the fact that they were not able to pass through onto the consumer the international price at which they were importing. Shri Geeta So Vishwanathan. they had 28,000 crores lost, for which the government compensated them for 22,000 crores. Equally, insofar as petrol and diesel prices are concerned, sir, on two occasions. Thank you for giving me this opportunity. In November 21 and माननीय again मंत्री in जी, May मैंने 22, गीता विश्वनाथन का अनाउंस कर दिया, आप बैठ जाइए. गीता विश्वनाथन जी. Thank you, sir. I convey my thanks to Honorable Minister for more and more connections given to under Ujjwala scheme, sir. Thank you. But I would like to know from the Honorable Minister, it is estimated that rural household with LPG connections are spending 6.7% of their income on fuel, which was 40% than the amount they were paying. Honorable member, short में. Shifting to LPG, thereby forcing them to make unfair choices about their basic standards of life. I would like to know from the Honorable माननीय Minister. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, अपना क्वेश्चन शॉर्ट में पूछो, नहीं तो जितना लंबा क्वेश्चन पूछोगे माननीय मंत्री जी उतना डबल जवाब देंगे. I must seek, sir, I'm happy to provide a shorter answer, provided to know what the question is. Sir, insofar as rural household spending is concerned, sir, I again reiterate, the government has taken a number of steps and very effective to insulate the consumer by bringing the price of petrol and diesel. They have not gone up since 6th April last year. Throughout the world, the increases are astronomical. In India, petrol and diesel prices in the OMC pumps have not gone up since 6th April of 2022. I think this point, sir, needs to be appreciated. Equally for gas, we have not allowed the increase in the Saudi contract price to be reflected in the domestic price. Sir, it is so easy to get excited and talk about things. The ground situation is India stands out as a shining example where the consumer has not had to face the increase in the global volatility and price increases. As I said, on 6th April 2022, petrol and diesel prices have not gone up in India, whereas they have shot up. You only need to look at what is happening in our neighboring countries. In one country, after 8 o'clock, you can't switch on the electricity because there is no energy. In another country, equally for gas, if the international price comes down, we are still willing. And if we need to look at the issues, equally, let me say, those who are recipients of or beneficiaries of Ujjwala, their consumption has gone up. I occasionally hear statements saying people don't take benefits. Average under Ujjwala, sir, is 3.68 cylinders in a thing. So think it has gone up very fast. And even those who earlier were not taking refills are now taking more and more refills. क्वेश्चन नंबर 102 श्री मनोज तिवारी जी. धन्यवाद अध्यक्ष जी. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा
उत्पादित खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं। क्वेश्चन नंबर 102। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्पादित खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले 3 वर्षों में खाद्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, खादी विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जो खादी में सुधार किया गया है, हमारा अंडर खादी डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम के अंतर्गत खादी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 2013 में खादी मार्क की शुरुआत की गई थी। खादी मार्क न केवल खादी उत्पादों की वास्तविकता की गारंटी देता है, बल्कि खादी को ऐसे ब्रांड के रूप में बढ़ावा देता है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संबंधी मूल्यों को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, खादी विकास योजना के विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटक के अंतर्गत उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, कारीगरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने, मानव परिश्रम को कम करने, बाजार की मांग के अनुसार नए उत्पादों को विकसित करने तथा स्थानीय कच्चे माल का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए विभिन्न अनुसंधान विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है और मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मगर मेरा एक पूरा प्रश्न है, जैसे हमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच और विजन जो खादी के लिए है उस पर बहुत गर्व है अध्यक्ष जी, और हमें पता है कि इसी के कारण आज युवाओं में खादी फैशन ट्रेंड कर रहा है। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें डेटा में मिला है कि इस समय निफ्ट के समान ही खादी भी फैशन वर्ल्ड की पसंद बन रही है अध्यक्ष जी, और खादी क्षेत्र के कामगारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित रहते हैं, जैसे युवाओं में खादी ट्रेंड हो वैसे ही। और मुझे एक अच्छी बात और आई है कि खादी ग्रामोद्योग केंद्र के जो अध्यक्ष हैं वो गांव-गांव प्रवास भी कर रहे हैं। पर मेरा प्रश्न है कि मंत्री जी बताएंगे कि जैसा वर्षों से जो गरीब कामगार हैं जो इस खादी को बनाने में सूत काटते हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, क्या उनका वेजेस बढ़ाने का कोई प्रावधान है, कोई योजना है, उसमें जानकारी चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से निफ्ट की जो बात की है उसके लिए गांधीनगर, बेंगलोर, कोलकाता और तेलंगाना में हब बनाए गए हैं, जिससे उनके कामों को ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके और नई नई फैब्रिक का उत्पादन किया जा सके। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार उच्च स्तरीय फैब्रिक कपड़ों की गुणवत्ता मानकों को प्रसार किया जा सके। विशेष रूप से हमारे जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि हमारे जो कारीगर हैं उनकी गुणवत्ता के लिए, उनकी सुधार के लिए क्या कुछ पैसा बढ़ाया जा रहा है। विशेष रूप से जब वो कर्तन करते हैं तो उन्हें 7.5 रुपए दिया जाता है एक कर्तन पे, लेकिन इसे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, इसमें कुछ न कुछ पैसा बढ़ाया जाएगा। निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदय, अध्यक्ष जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण खादी आज 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर रहा है। मेरा बड़ा साधारण सा सवाल है सर कि जो केवीआईसी है उसके जो बड़े बड़े शोरूम हैं वो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल, गोवा, और खादी ये रूरल एरियाज में रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। और जो 298 क्लस्टर हैं खादी के, उसमें 250 क्लस्टर वैसे हैं जो कि इसी वेस्टर्न इंडिया में मौजूद है सर। ईस्टर्न इंडिया इससे अछूता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से साधारण सा प्रश्न है कि वर्कसेट प्रोग्राम, मिशन सोलर चरखा, स्फूर्ति, वर्किंग कैपिटल, हनी मिशन और जो कंपटीशन आ रहा है दुनिया में खादी को प्राइवेट सेक्टर से जो आ रहा है या हैंडलूम सेक्टर से अलग हटकर जो मशीन मेड कपड़े पर आ रहा है, उसके बारे में ईस्टर्न इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो समस्याएं हैं जहां खादी की प्रेजेंस कम है, उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय,
सम्मानीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। खादी का विस्तार के बारे में माननीय पंतप्रधान जी का इस विभाग पर अच्छे तरह से ध्यान है। खादी का विस्तार होने के लिए काफी तरह की योजनाएं आज तक शुरू हो गई है, उसका संदर्भ अभी अभी राज्य मंत्री ने दिया है। क्लस्टर के बारे में जो राज्य में जिस इलाके में क्लस्टर अभी तक पहुंचे नहीं है, वहां क्लस्टर देने के प्रयोजन सरकार कर रही है और रोजगार भी बढ़ाने का कोशिश है। खादी से रोजगार बढ़ाने की कोशिश करने के लिए ये प्रावधान किया जाता है और खादी में अलग अलग योजना, गुणवत्ता में सुधार, चरकों में जो सुधार, इसमें इसका कौशल्य विकास के माध्यम से आधुनिक टेक्नोलॉजी के वजह से ये खादी में सुधारने का काम चालू है और ज्यादा रोजगार निर्माण करके उत्पादन खादी के कामगार को बढ़ाने की कोशिश चली है। श्रीमती कनिमोजी। Sir, we know that the khadi craftspeople and the weavers have been really affected during COVID. But in the minister's reply, I see that the financial assistance has been reduced drastically from 31.28 crores to 7.39 crores. Why is it you supposed to be helping them and aiding them? You've been reducing that, and the Center of Excellence for Khadi has been set up in NIFs in Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, and Shillong. Why has Chennai been left out? Thank you. Very good question. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, चेन्नई को छोड़ा नहीं गया है। जहाँ रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, वहाँ फंड वहाँ भेजा गया, उसकी नियुक्ति करते गई। 19-20 में 31 करोड़ दिए गए थे, 20-21 में 12 करोड़ दिए गए थे, 21-22 में 7 करोड़ दिए गए। एक जो अमाउंट कम होती गई है, उसी समय बैंक के माध्यम से जो लोन मिले थे 150 करोड़, आज भी 145 करोड़ इस डिपार्टमेंट के बाद बैलेंस है। वो जहाँ भी आवश्यकता है खादी के लिए, खादी की टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए, खादी के चरखा चलाने वाले को वहाँ कुछ ही चीज की आवश्यकता हो तो 145 करोड़ आज भी डिपार्टमेंट के पास है। श्री बी मेहताब जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. खादी एक इमोशनल कनेक्शन हमारे सबके साथ, सब परिवार के साथ है। हैंडस्पन खादी, यही उसकी खूबियत है और इसलिए मैं जानना चाहता हूं, एक तो प्रोडक्शन और दूसरा मार्केटिंग। प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा जोर हम दे रहे हैं या मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं? आपका उत्तर आएगा, हम दोनों पर दे रहे हैं। पर अगर आप विस्तार से जाएं, प्रोडक्शन इस कई सालों में कहां बढ़ी है और किस चीजों पर बढ़ी है? खादी was supposed to be a poor men's dress और poor women's dress, पर हम इसको मिडिल क्लास और कंज्यूमर दुकान के जरिए इसको बिकने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है मार्केटिंग के हिसाब से और प्रोडक्शन के हिसाब से? जैसे निशिकांत जी ने कहा और कानीमोड़ी जी ने अभी कहा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके पास रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट ना करें, पर रीजन वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही ढंग से हो तो ये ज्यादा महत्व रखेगा। इस सिलसिले में मैं सरकार की मनीषा जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, खादी तो आम आदमी या आम कामगार गरीबों के लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए एक खादी के माध्यम से काम किया जाता है। खादी में सुधार हो
ज्यादा से ज्यादा कामगार को रोजगार मिले, अच्छा उत्पन्न मिले, इसमें कोशिश में सरकार काम कर रहा है। जहां आवश्यकता है इसमें काफी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी हम सुधार कर रहे हैं। और जो बेस है खादी का, खादी शुरू किया जिस कारण से वो बेस शुरू रहे, क्वालिटी वाइज खादी अच्छा निर्माण होवे, और मार्केटिंग इसलिए कर रहे हैं कि उसे मार्केटिंग करेंगे। जो कामगार खादी बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, वो मार्केटिंग करने के बाद ही उनको पैसा आ जाएगा। तो हमारा ध्यान खादी में रोजगार देना है, कामगारों को पर कैपिटा इनकम में किस तरह से सुधार हो, यह हमारा सरकार का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 103 से मोहन भाई कुंडारिया। माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। प्रधानमंत्री और मंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूं। खास करके राजकोट स्मार्ट सिटी में 71 प्रोजेक्ट परियोजना में स्टार्ट किया था, उसमें से 33 परियोजना पूर्ण हुई है। 38 परियोजना का काम चालू है। सरकार की 2017 से 2023 तक 5 वर्ष की परियोजना था। वो जो प्रोजेक्ट 38 चालू से, उसमें समय मर्यादा बढ़ाने के लिए सरकार कोई सोच रहा है क्या? Honorable Speaker, sir, I want to thank the honorable member for raising this question on the smart city project in Rajkot. और जैसे माननीय सांसद ने कहा, यहाँ पे राजकोट में टोटल 71 प्रोजेक्ट हैं 2161 करोड़ के कॉस्ट के लिए। इसमें 33 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं 803 करोड़ के, और 38 प्रोजेक्ट जो हैं 1355 करीब करोड़ के, विच इज वर्क इन प्रोग्रेस। सर, अभी ये जो योजना है इसमें फंडिंग जो है जून 2023 तक की हमने प्रोविजनिंग की है। और जिस तरीके से राजकोट में काम हो रहा है, my assessment sir is that Rajkot is one of the more successful amongst the successful smart city projects। और हमारा जो सिस्टम है, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, तो हम अगली सेगमेंट के लिए भी प्रोविजनिंग और जो हुई है उसमें पैसा रिलीज कर देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब से लेके जून तक जो भी हमारे पास समय है उसमें हम इनकरेज करेंगे राजकोट की स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल को, और जो भी ओवरसाइट हो रही है, हम स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें ओवरसाइट करती है। जो 6 उनकी स्मार्ट सिटीज हैं गुजरात में, हम केंद्र सरकार से भी करते हैं, और हमें विश्वास है कि काम समय से पूरा हो जाएगा, और इसके लिए हम उनको इनकरेज करते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में स्मार्ट सिटी में शेयर को चेंज किया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में गुजरात में नया कितना शहर में वो प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा? देखिए सर, केंद्रीय सरकार की तरफ से जो फंडिंग है स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स के लिए, वो है टोटल हमारी तरफ से 500 करोड़, और 500 करोड़ उसमें से राज्य सरकार की तरफ से आना है, और बाकी जो पैसा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स के थ्रू। और बाकी सर, द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड्स रेडी टू कोऑपरेट इन फॉर ऑल द 100 स्मार्ट सिटीज। सब जगह इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन गए हैं। अगर कुछ और भी जरूरत हो, पर अभी तक जो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स की फंडिंग है सर, वो अभी सिर्फ इन 100 के लिए है। और अभी अगर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से कुछ सिटीज को स्मार्टिफाई करना चाहते हैं, जैसे कई सरकारों ने किया है, राज्य सरकारों ने, तो हम उसको इनकरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 भी क्लब किया जाता है। माननीय मंत्री जी 112 क्लब कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन है। श्री अर्जुन मीणा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 112 बोलो। क्वेश्चन नंबर 112। माननीय मंत्री जी। सर, a statement is laid on the table of the house. माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तृत से देश में स्मार्ट सिटी के बारे में विस्तृत से उत्तर दिया है। मैं राजस्थान के उदयपुर स्मार्ट सिटी के बारे में लगभग 127 परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है और 1371 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 9 परियोजना का कार्य चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या मंत्री जी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आने जाने वाले लोगों के लिए जाम लगता है बार बार, उसको निजात पाने के लिए उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से कोट चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने की मंशा रखते हैं क्या? धन्यवाद। कोई मंत्री जी के पास कोई नक्शा थोड़ी लगा, एक एक रोड का बता देंगे भाई। आप तो जनरल क्वेश्चन पूछो ना, इस रोड से उस गली का। ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं उदयपुर की जो स्मार्ट सिटी है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। नेशनल रैंकिंग में आज वो 5वें स्थान पे है एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। पर मैं with due modesty, I also want to say, sir, that Udaipur is one of the most beautiful cities. Or even before the smart city project commenced in June 2015, Udaipur already had a very heavy footfall of tourists visiting the many beautiful locations there. And I've greatly benefited from these visits. Sir, जो smart city projects में individual projects take up किए जाते हैं, वो स्टेट की तरफ से आते हैं। और इस समय मैं समझता हूं कि जो उदयपुर में आप देखिए तो 127 प्रोजेक्ट्स, वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, 1372 करोड़। वर्क ऑर्डर स्टेज पे 9 प्रोजेक्ट्स हैं, 257 करोड़। Since only a few months are left for the projects to be completed, मैं समझता हूं इस समय कोई नया प्रोजेक्ट उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए स्कोप कम है। बट राज्य सरकार के एफर्ट से, केंद्रीय सरकार से एफर्ट से, अगर जो माननीय द ऑनरेबल मेंबर मेंशन ट्रैफिक कंजेस्शन एंड ही हैड आस्क्ड फॉर एन एलिवेटेड रोडवे, दीज आर ऑल प्रोजेक्ट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड बाय द कंसर्न्ड एजेंसी अंडर डिफरेंट प्रोविजंस व्हिच आर अवेलेबल। सर, राज्य सरकार आपसे सलाह नहीं लेती, वो तो खुद ही चेंज कर देती है। शशि थरूर जी। Much, Mr. Speaker. Speaker, I was looking at the minister's response, and I must say I'm concerned about the very uneven pace of implementation of the Smart Cities mission, given that there are only about 4 months left for the ultimate deadline of June 2023 for the 100 cities, sir. If I take one example or one pair of cities that were both selected in September of 2016, you take Varanasi on the one hand, and you take Atal Nagar in Chhattisgarh. Varanasi, pretty much every program has been done, 98 out of 104 according to your website, whereas Atal Nagar, in fact, only 3.8% of the projects, that is 2 out of 53 are completed. So my question to the Honorable Minister is, first, how do you explain these discrepancies and the unevenness in the implementation of the smart city projects? Prime Minister. Secondly, how do you account for the delays? If there are some cities where there are major delays, there must be some common factors that your ministry has studied to understand why these projects are not getting complete. And finally, sir, how does Thiruvananthapuram fare in this league table of uneven implementation? Thank you, Mr. Speaker. You should be the Prime Minister. Sir, आप वरिष्ठ सदस्य, एजुकेशन का काम तो राज्य सरकार करेगी ना, तो सुपरविजन करेंगे। Sir, I have a very simple question. The honorable member knows, and I know the rest of us know, that when you read facts and figures and statistics, you have to be a little careful. Sometimes the time for a project under construction to be completed is very little. But till the completion certificate comes, it will be shown as work under progress. Sir, almost all 100 cities are doing fairly well. Some, due to the COVID period, there was a slowdown, or there were local factors. जैसे आपने सर हिंट किया from the chair कि जो राज्य सरकारें होती हैं उनका भी इसमें रोल होता है। सो अभी जो केरला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूं इस पे हमें honorable member and I can have a special seminar along with other members to discuss it. But I don't think that it would be appropriate for me to give
share my assessment on why some things don't happen in state governments. It may not be in the spirit of the discussion we are having. There are also other factors, common factors, where oversight is effective, where the advisory committee for the projects are meeting. अब एक प्रश्न उठा था सर राजकोट की स्मार्ट सिटी के बारे में. मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये बताने में कि उसकी जो एडवाइजरी कमेटी है जिसमें ऑनरेबल एमपी इज आल्सो अ मेंबर, उनकी 16 मीटिंग्स हो चुकी हैं. हर एक क्वार्टर में उनकी मीटिंग होती है. तो जहां पे दी लोकल एमपीज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टेक दिस थिंग, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस. जहां तक ये अनइवन प्रोग्रेस है, आई वुड रिक्वेस्ट कि जब हमारी आप वेबसाइट भी देखें तो उसमें वेबसाइट में भी देखें तो वेबसाइट भी देखें. वाराणसी was declared a smart city in September 2016. Atal Nagar came in round 3 much later. So to compare something which is in round 1 to something which is in round 3 also requires what I call, and if I may have your permission, it's what is called a statistical hop, step and jump, which I think educated members and analysts should try and avoid indulging in. अधीर रंजन जी, मेरा सवाल दूसरे सवाल पे है. मुझे दूसरे सवाल पे पूछना है सर. पूछे ना. नहीं, वो मंत्री नहीं. तो आप उठे क्यों थे? आपको अगर प्रश्न नहीं पूछना था तो आप उठे क्यों थे? सर इसलिए उठा था कि शशि थारूर जी जो सवाल पूछा था सर, ये डिस्क्रिपेंसी के बारे में उनका सवाल स्पष्ट था कि बेनारस वो विद्वान है, आपका सब. लेकिन our concerned minister is a well loquacious minister in the house. He knows how to deflect, and how to. क्वेश्चन नंबर स्मार्ट सिटी तो 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 100 को अलाउ कर दूंगा क्या? 100 सिटी 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्मार्ट सिटी तो 100 को अलाउ कर दूंगा क्या? नो. 104 श्री बीबी पाटिल. सर जस्ट स्मॉल क्वेश्चन, जवाब पटल पर रखा है. श्री दयानिधि मारन. Thank you, Speaker, sir. Sir, our minister is a very dynamic minister, and he has all the data in his hand. I just want fingertips. I just want to ask you, sir, you're doing this pilot project about 2 parts. The first part is this: how you ensure that when you lay these fibers, you don't expand the roads again, so that these fibers don't get affected? And is this fibers which are laying for along with the national highways, will it be exclusively for the national highway program, or will it also be leased out to other private operators like internet ISPs and other service providers? So part B, since Bengaluru is being mentioned, and we have been making a severe request for you. So recently I had an opportunity to travel to Ranipet from Chennai. The roads are pathetic. All the land has been given by the state government. The expansion work is all lands, but your contractors have gone to the court. For the last 4 years, sir, the Chennai-Bengaluru highway is in a mess. It takes nearly to cross, 100 kilometers. It takes 4.5 hours. This is a very pathetic state. So I know you will come and tell me that because all the contractors have gone to court. Sir, what is this process? How do you overcome it? So why should a common man, or why should the people of Tamil Nadu suffer because your contractors or your people are not able to ensure that these contractors fall in line? So please ensure that these projects are completed on time. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, basically the problem related with the Chennai-Bangalore Express Highway, I just got opportunity to visit on the site. The problem is not with my department. Here I need your cooperation for that. Aggregate is not available. Sometimes the permission given for 3 months, after 3 months again to get new permission is a difficult task. Then there is no permission for mining. Also there is a big problem. Then how we can make the roads? The problem is land acquisition is a problem. Environment forest clearance is not there. Still, Bangalore side express highway is really, the progress is very good. But still as Tamil Nadu, we don't have land, we don't have clearances, then how the contractor are going to work for that? That is to be a big problem. I'm really thankful for you.
that I need your cooperation. Particularly, I want to work for Tamil Nadu. We have a lot of projects. Many times I explain it to the Honorable Member of Parliament, and many times I have given my representation to Honorable Chief Minister also, that as far as without land, without environment clearance, how it is possible for us to construct the roads. So exactly, I'm with you. We want to complete this Chennai-Bangalore Express Highway, and actually my target is to complete this project up to end of this December this year. This will take from Chennai to Bangalore 2 hours. And actually, at time I visited Bangalore to Mysore. The work is completed in next month. Prime Minister is, we are talking with the PMO, taking date for that. And it will be only 1 hour from Bangalore to Mysore. I understand the importance of the road, and 100% we will try our level best to clear it. But also your cooperation will be there. It will be a great thing for me to complete the project. Regarding this Delhi-Mumbai Express Highway, regarding this is a Greenfield Express Highway. Yes, I am telling you that. We are working on that. About our mandate is only to construction of road. But now in many times, petroleum minister, they need land acquisition for making of gas pipeline, making of petrol and diesel, other things they need. They are making a lot of big projects. Then there is some of the optic fiber, the other department are doing a lot of work. The idea is experimentally for a pilot project, we are doing 2 projects. One is Delhi-Mumbai Expressway, Greenfield Expressway, and the other is Hyderabad-Bangalore Industrial Corridor, that is Brownfield Expressway. We have already appointed the agency Andhra Pradesh Urban Infrastructure Asset Management Limited, appointed by our NHLML. That is the organization in our NHI. And now the planning is that the cost is very high, because it comes in crores, 6 to 7 crore rupees per kilometer. The idea is we can make a duct where we can make a petroleum pipeline, we can make IT fiber line. Also there will be pipe, PVC pipe or the LDP pipe or HDP pipe for using for optic fiber cable. Then we can use electric cable also, and that can be easy because we don't need any land for that, because already acquisition is there. We can save the money on that. So Prime Minister program on Gati Shakti, we have to create cooperation, coordination and communication between the stakeholders. On the basis of that we are doing. But now I am thankful for honorable member to asking me this question. Now we are framing the policy, whether it is possible to work on BOT. If the private people can invest the money in duct, and then we can give these services to the concerning department, it can be 100% whether it is possible or not. But because of today, when I was taking the briefing, we have taken a decision to formulate the policy on PPP mode. If it is not economically viable on PPP mode, we can make it in hybrid annuity mode. We will finance some subsidy for that. But this is the need of the hour, because as far as the target of our government is concerned regarding the popularity of internet and other things, it is very important. And I feel that this is the time that our target is to make the optic fiber cable up to 50 lakh kilometers. So we need to connect villages also. And because of 5G also, there is a great importance for that. We are working on the process, but basically my mandate is only for road construction. That is with the IT ministry and other ministries are there. But we have the land is ready. In Delhi-Mumbai Express Highway, we have a land available 120 meters. The one lane is only 3.5 meters. We are first stage making only 8 lane. We can go up to 16 lane. Still, we can give land for bullet train. Today, tomorrow, even if they want to start bullet train work from Delhi to Mumbai, land is available. We are also thinking on line of Hyperloop and something. And also the Delhi-Jaipur highway. The first time, the Prime Minister is going to inaugurate at 12, where we are planning for making of e-highway. From Delhi to Jaipur, the electric cable will be there. And the futuristic technologies are concerned. The idea is our truck and buses like the train, they're taking the advantage of that cable and going through Delhi to Jaipur. We are working on that, and that is also a first pilot project. I don't know whether how it can going to get success, but it is a first trial for that. I'm very much thankful for you for asking me this question. And again, I'm humbly request you, all members of Tamil Nadu, in your constituency regarding NHI work, please cooperate us. We want to do it. Question number 105, Srimati Sajda Ahmad.
मंत्री। माननीय मंत्री जी। सर, सदन के पटल पे रखा गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर का मत आई नहीं ना। सर मेंबर नहीं है सर। अच्छा सर, the issue is that the question that has been raised under part 2, I mean B, whether the government has taken note that the huge virtual water trade of India is a great concern for water security, and if so, the details thereof. In your reply, in part B, you just check it out that this has not been spelled out in an elaborate manner. BC has been marked, but the core issue of virtual water trade has been conspicuously absent in your explanation in part B and C. We know that in the year 1993, the virtual water trade was conceived by Tony Allen. The name itself implies import and export of hidden water in various products. We don't have any idea of what is called virtual trade because people are not aware of it. I personally even not aware of it. Do you have any policy of virtual water trade in India? And what are the challenges and what are the benefits? Have you ever estimated on it? Because in the prevailing situation, I think this could be considered. But the question was raised, but the answer is seriously deficient. So that is why I thought it prudent to flag your attention. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने वर्चुअल वाटर ट्रेड के बारे में अपनी अनभिज्ञता और सदन की अनभिज्ञता के बारे में चर्चा की है। जिन सज्जन का नाम माननीय सदस्य ने लिया है, उन्होंने एक अध्ययन करके ऐसा बताया कि बहुत सारे क्योंकि जो भी कुछ उत्पादन होता है, चाहे भोजन का उत्पादन है, जो कपड़े हम पहनते हैं उसका उत्पादन है, जो हम सेवाएं जो हम उपयोग में लेते हैं, हर एक तरह की सेवा में कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता होती है। जो कृषि के उत्पाद भारत एक्सपोर्ट करता है, उसको लेकर के माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की थी कि हम जो चावल निर्यात करते हैं, हम गेहूं निर्यात करते हैं, हम कपास निर्यात करते हैं, हम चीनी निर्यात करते हैं, ये सभी वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं और इनके निर्यात के चलते हम वर्चुअली पानी को निर्यात कर रहे हैं, जो कि भारत जैसे देश में जिसमें पानी की कमी है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो कृषि के क्षेत्र में पानी उपयोग होता है, इसके उपयोग को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने स्मार्ट इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रेशराइज पाइप्स के माध्यम से इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, जिसके लिए सामान्यतः माना जाता है कि 20% पानी की बचत होती है, और मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, इन सरकारों ने इस दिशा में बहुत बेहतरीन काम किया है। इसके अतिरिक्त जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप से आपको जानकारी होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें हर एक बूंद से अधिकतम उत्पादन हो सके, इस दिशा में काम करना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए भी सरकार काम करती है। इन सब के अतिरिक्त भी यदि मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, आप सबको इस विषय का संज्ञान है कि इस वर्ष को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर और अनुरोध पर मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से दुनिया में फूड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और उसके कारण से जो अवेयरनेस बढ़ रही है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर नेशन, क्योंकि हम दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट्स पैदा करने वाले देश हैं, सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ मिलेट्स पैदा करने वाले देश हैं। अगर इस समय में हम अपने किसानों को उसमें प्रोत्साहित करके अपने देश में और पूरे विश्व भर में उपभोग के लिए मिलेट्स पैदा करें तो हम वाटर फुटप्रिंट को नीचे ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी वाटर फुटप्रिंट को कम करने के लिए विशेष रूप से, क्योंकि ये चावल के संदर्भ में कहा गया है, चावल के उत्पादन में आईसीआर ने इस तरह की सीड वेराइटीज को डेवलप किया है कि उन सीड वेराइटीज से पानी के उपयोग को 1/4 25% तक लाया जा सकता है। जहां 1.2 से 1.8 मीटर तक स्टैंडिंग वाटर, क्यूबिक मीटर तक स्टैंडिंग वाटर की आवश्यकता है, उसको 30 सेंटीमीटर तक रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि पानी और
कृषि दोनों राज्य का विषय है। नीचे इस विषय को इन टेक्नोलॉजीज को, वेराइटीज को प्रोपोगेट करने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्यों की है और बहुत सारे राज्यों ने इसमें बहुत अच्छा काम भी किया है। मैं हरियाणा का यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने चावल के उत्पादन के रकबे को घटाने के लिए एक इंसेंटिव स्कीम शुरू की और उसके कारण से लगभग 1 लाख हेक्टेयर रकबा उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है वो डाइवर्सिफाई करने में सफलता प्राप्त की है। इसी तरह के प्रयास महाराष्ट्र ने भी किए कि जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि गन्ना और जो है कपास केवल ड्रिप इरिगेशन से ही उगाए जा सकते हैं। हमको निश्चित रूप से इस दिशा में संवेद स्वर से हम सबको भी बात करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हमको अपने क्षेत्र में, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि भी हैं और हम अपने क्षेत्र के लीडर्स भी हैं। हम अपने क्षेत्र में किसानों को अधिकतम उपयोग किस तरह से, पानी के न्यूनतम उपयोग में अधिकतम खेती किस तरह से कर सकते हैं, इस पर हम सबको निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। तब जाकर के हम इसको वर्चुअल ट्रेड बैलेंस को कम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 श्री दुष्यंत सिंह जी। तो चेयर सर। माननीय मंत्री जी। पटल पे लग जा गया। धन्यवाद स्पीकर जी। आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनर मिनिस्टर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं और उन्होंने उनके निर्देश में रीजनल कनेक्टिव स्कीम का काम शुरू किया गया है और जिसमें हब एंड स्पोक का काम शुरू किया गया है कि मतलब बड़े एयरपोर्ट से छोटे एयरपोर्ट बड़े एयरपोर्ट को लिंक करना था। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट किया गया है, अभी ट्रैवल अब बढ़ चुका है। मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि वर्तमान के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर्स हैं, एक कमेटी रिपोर्ट आई है, पेपर में भी लिखा गया है कि वर्तमान में जो वॉच ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है, इसकी जो रेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें लोगों को इसमें जो ये क्या गया है कि डीजीसीए ने मांगा है कि रूल्स की वर्किंग कंडीशन को बदलने का, कि वर्तमान की जो एग्जेम्पशंस हैं उसको 5 टाइम्स अभी पुअर कंडीशंस हैं इनके जो हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं। क्या सरकार जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सतुलन करेंगी और क्या नई पोस्ट जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की पोस्ट है वो करने के लिए प्लानिंग करेंगी और ये कब तक होगा जिससे हमारे पूरे देश में जो आरसीएस एयरपोर्ट्स हैं और बाकी के एयरपोर्ट्स हैं इसका पूरा लाभ ले पाएंगे? धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, जहां तक एटीसीओस का सवाल है, डीजीसीए इनकी पूरी जानकारी रखता है, इनके बारे में पूरी तहकीकात करता है और एक का नंबर रखता है कि इतने एटीसीओस होने चाहिए। उसके हिसाब से हम उतने एटीसीओस के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय ने 2021 से अब तक 792 लोगों की रिक्रूटमेंट की है और इस समय 456 एटीसीओस के लिए कार्य प्रगति पर है ताकि ये ट्रेन होकर अपनी अपनी जगह पर जा सके। जहां पर एटीसीओस की कमी होती है वहां पर वॉचार्स उसी हिसाब से कम कर दिए जाते हैं ताकि जो वहां पर एक्चुअल ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कार्य किया जा सके। हमारा सतत प्रयास है कि हम जो भी रिक्वायरमेंट हमको दी जाए उसको पूरा करें ताकि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कमी ना आए। सेकंड सप्लीमेंट्री सर, मैं राजस्थान के उस भाग से आता हूं जो एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है सर। झालावाड़ और बारां में हमारे झालावाड़ का जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जहां हाड़ौती में, जैसे आपका क्षेत्र आता है, आपके क्षेत्र में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए, हमारे क्षेत्र में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए, हाड़ौती में के साथ साथ पूरे राजस्थान में एयरपोर्ट बनना चाहिए। क्या वर्तमान की सरकार राजस्थान के लिए जो आरसीएस रूट्स में हमारे एयरपोर्ट्स में नए रूट्स प्लान करेंगी और प्लान करने के साथ हमें अश्योरेंस चाहिए कि हमारे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या सरकार हमारे आरसीएस रूट करके देगी जिससे हमारे जो नए एयरपोर्ट बनेंगे, जिससे हमारे जो बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे क्षेत्र में, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनको आने जाने में और अब जो
हब एंड स्पोक का जो आपका स्कीम अब चल रहा है, क्या हमारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को भी आप प्रोत्साहन करेंगे और आरसीएस रूट से जोड़ेंगे, और क्या झालावाड़ को इस रूट से आप जोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, जहां तक का आरसीएस या उड़ान का सवाल है, सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसी स्कीम है जिससे कि उड़ान और हवाई जहाज से चलने का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। उड़ान एक मार्केट ड्रिवन स्कीम है जिसके अंदर एयरलाइंस समय समय पर जो बिड्स होती हैं उसके अंदर भाग लेती हैं और जिन रूट पर वो जाना चाहती हैं अपने व्यवसाय के एनालिसिस के बाद उसको वो लेती हैं। तो अगर कोई भी एयरलाइन झालावाड़ जाने के लिए तैयार होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम झालावाड़ को उसी हिसाब से डेवलप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एयरलाइन के ऊपर निर्भर है और इस समय जबकि सब कुछ मार्केट ड्रिवन है, सरकार सिर्फ उनको बता सकती है कि आप इसके ऊपर कार्य करिए, लेकिन उनको फोर्स नहीं कर सकती। श्री रितेश पांडे। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर्स की संख्या और बढ़ाने के लिए लखनऊ के ऊपर जो ज्यादा ट्रैफिक है, अयोध्या वहां से मात्र 120 किलोमीटर दूर है, जहां पे एयरपोर्ट बन करके लगभग तैयार हो गया है। वहां पे फ्लाइट्स आने से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की वहां एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी और अयोध्या और अंबेडकर नगर, आजमगढ़ जैसे जिलों के लिए एक उपलब्धि जो है वहां पे, बस्ती भी जो है वहां पे एक उपलब्धि बढ़ेगी। तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की नियुक्तियां बढ़ाने के लिए क्या अयोध्या एयरपोर्ट को आप जल्द से जल्द चलवा करके वहां पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को आप नियुक्त करेंगे और वहां पे जो लखनऊ का ज्यादा ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा, एयर ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा कि नहीं, और कब तक होगा? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया जाता, सिर्फ जब कोई इमरजेंसी आती है तभी डाइवर्ट होता है। एयर ट्रैफिक अपने रूट्स के ऊपर चलता है, जहां पर हवाई जहाज ठीक से जा रहा है, हवाई अड्डा ठीक है, मौसम ठीक है, हवाई जहाज वहां पर उतरेगा। लेकिन जहां तक इस नजदीकी का सवाल है, जब भी एयरपोर्ट तैयार होगा, जब भी उसके ऊपर हवाई जहाजों का चलन होगा, एटीसीओज की जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 107 श्री बालाशोरी बल्लभ नेनी। 107 माननीय मंत्री जी। Sir, the allocation for education empowerment of minorities has come down in 2022 to 24. It came down from rupees 2,515 crores in the budget estimate of 2022-23 to rupees 1,689 crores in 2023-24. It means you are spending less money for education empowerment of minorities in 2023-24. Is it true? What is the reason for behind to reduce this much of amount? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक के रूप क्रम विशेष अधिकारी प्राप्त वर्ग सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजना को लागू किया। अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। पिछले 5 वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित शिक्षण सशक्तिकरण योजना, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिक उत्तरोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिक संसाधन अतिरिक्त योजना, रोजगार का आर्थिक सशक्तिकरण योजना, प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना, जैसे हम लोग अल्पसंख्यक को ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
NFD-FC को युक्ति करते हैं। विशेष योजना जियो फांसी भारत में फारसियों का आबादी में हो रही गिरावट को रोकने के हेतु योजना, कौमी वक्फ बोर्ड योजना। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य, अब जवाब तो 1 घंटा बोलते 1 घंटा चलाता है क्या? मान्य सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित क्रम संख्या 2 पर उपस्थित कागजात को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3, श्री VK सिंह जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं मेरे साथी श्री रामेश्वर तेली जी के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है, जो आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित है, उनको आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 7, श्री कौशल किशोर जी। महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, श्री भगवंत खुबा जी। धन्यवाद महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। माननीय सभापति महोदय, मेरे साथी श्री विश्वेश्वर टुडरी के नाम के आगे उल्लिखित दस्तावेज जो क्रम संख्या 9 पर है, मैं सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं आपकी अनुमति से मेरे सहयोगी साथी श्री शांतनु ठाकुर के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है, जो क्रम संख्या 10 पर अंकित है, उनको सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11, श्री निहाल चंद जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अपने नाम के आगे सुमुख एवं सूचीबद्ध प्राकलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 21 और 22 हिंदी और अंग्रेजी के संस्करण को मैं प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 12, श्री निहाल चंद जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज की संशोधित सूची में मेरे नाम के सुमुख यथा संकेतित एस्टिमेट कमेटी की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण को की प्रति मैं पटल पर रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आइटम नंबर 13, श्री राम शिरोमणि वर्मा जी। सभापति महोदय, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 9वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 14, श्री खगेन मुर्मू जी। Thank you, sir. With your kind permission, I beg to present the 79th, 80th, 81st, and 82nd reports, Hindi and English versions of the Committee on Government Assurances as listed against my name at serial number 14 in today's order paper. Item number 15, Shri Pratap Rao Jadhav ji. Ji. Sir, I wish to present the 37, 38, 39, 40th, 41st, and 42nd report
Hindi and English version of the Standing Committee of Communication Information Technology as listed by my name. श्री संजय सेठ जी ने किया। आइटम नंबर 16 श्री कौशल किशोर जी। सभापति महोदय जी, मैं श्री ब्रिजेंद्र सिंह संसद सदस्य द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत लक्ष्य के संबंध में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 5 के दिनांक 2/2/2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में अपना वक्तव्य अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले जिन माननीय सदस्यों के 377 के अधीन मामले स्वीकृत हुए हैं वो कृपया अपने विषय को सभा पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आइटम नंबर 18 केंद्रीय बजट पर चर्चा, श्री मरगनी भरत जी। Sir, our party is given 30 minutes of time, sir. So kindly make sure of that time. आप बोलिए तो। वही तो, party is given 30 minutes of time. Up, please start. Sir, at the outset, I'm so grateful to place my views on the national budget 23-24, sir. Sir, despite of the precarious situation globally, aftermath of pandemic and the war between the Ukraine and Russia, the finance minister managed to bring down, even though all the things, the global economic turmoil has been happening, the finance minister managed to bring down the fiscal deficit from 10 to 5.9%, sir, and the growth rate is around hovering around 6 to 7%. But how far the vision and the dream of the Honorable Prime Minister's $5 trillion economy can be achieved, sir? Sir, of course, we do understand. माननीय सदस्यगण, कृपया बातचीत बंद करें। नो मर्मरिंग प्लीज, प्लीज। Sir, we do understand that the Honorable Finance Minister made her budget very balancing, sir. Sir, the 10 lakh crores of capital expenditure, which is coming around 3.3% of GDP. And there is a feel-good factor among the middle class through direct taxes, sir. And at the same time, if the government of India would have slashed down the cylinder price, the gas cylinder LPG price, they would have managed to gain a lot of attraction from the women voters, sir. But perhaps they missed that electoral gamble, I guess. Sir, primarily, I have my own reservation when it comes to my state of Andhra Pradesh, where my state was unscientifically bifurcated and the injustice is made to my state many more times. I've represented in this house itself, and I wanted to reiterate this to this government. Sir, the people of Andhra Pradesh, it is deeply bothering why this is the 9th consecutive year for the budget, sir. There is no prominent allocations made to my state, sir. And it is really, really heart-wrenching for the state of Andhra Pradesh, sir. Sir, as I said, the Andhra Pradesh state was bifurcated by the same old Congress party without any rhyme or reason, sir. Sir, just only for the political foul play or the political benefits, they have splitted the Andhra Pradesh state, divided. Is just like a birthday cake, sir. There is no any scientific evidence. When the state is getting bifurcated, they should have to see the repercussions, what is going to happen. But as I said many more times, the Hyderabad Hyderabad capital city is given to the Telangana, sir. Never in the history of independent India, when the state got bifurcated, the capital city will be restored with the residual state, sir. But here it is completely turned around. Sir, here the people of Andhra Pradesh invested our sweat and blood for about 70 years, sir. Sir, in turn, what we have achieved, and the great Hyderabad city has went to the state of Telangana, sir. Sir, now, as I said, sir, 9 years of the budget, there is no prominent allocations for the state.
And also that the act is made in this floor of the house, and the government of India should have to honor the act, sir, should have to implement the act, sir. But now the ruling party has left the people of Andhra Pradesh in lurch, sir. And I wanted to reiterate, sir, I wanted to reiterate, which is very loud and clear. And the parliament should have the ears to hear my voice, sir. And all the country should have to understand, sir. Sir, these and the Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, has promised in the floor of the parliament that in compensation for the bifurcation, Andhra Pradesh will be given the special category status, sir. So what all the benefits, what we get from this special category status, I would like to read out, sir. The preferential treatment in central assistance, the concession on excise duty to attract the industries, additional budgetary support from Government of India, 90% will be shared by the Government of India in centrally sponsored schemes, and 10% can be availed through loans. Sir, the tax concession to attract the industry, sir. Above all the above assurances approved by the Union Cabinet in March 2014. Sir, here Telangana is not the new state, sir. Andhra Pradesh is the new state. We have been facing the burdens, we have been facing the troubles since 9 years, and the Telangana agitation for 4 years. So we are really dying for the development, sir. So all these 13 years, we have lost the time for the development, sir. Sir, secondly, I would like to convey to this house that Article 4, it says that the bifurcated state under the Article 3, the supplemental, incidental, consequential measures has to be taken care by the government and the parliament, sir. Where are all these? I've been asking, sir. Sir, for the better understanding, so many the ruling party, I would like to quote in Hindi also, sir. सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करना चाहता हूं. मुझे ऐसा लग रहा है, सर, मैं थोड़ा इतिहास को याद दिलाना चाहता हूं, सर. भगवान राम को 14 वर्ष वनवास को भेजा गया था. उसी प्रकार हमारे आंध्र की जनता के साथ 10 साल का अन्याय किया गया, सर. सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विनम्रता पूर्वक से अनुरोध करता हूं, सर, आप भगवान राम के भाई भरत जैसा आंध्र राज को अपने कंधों पे रखकर विकसित रूप से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए, सर. मेरा विनती है, सर. He himself is Bharat. Thank you. He himself is Bharat. Sir, yes, carry on, please. Sir, and the AP Reorganization Act, sir, I would like to come to the AP Reorganization Act of 2014. The less I speak on this, the more the ruling party will be in the comfort zone, sir. Sir, we are not here to enjoy the luxuries. We are not here to enjoy the comforts. We are here to sweat it out and protect the rights of our country, and especially for the rights of my Andhra Pradesh state. We are here to make the legislation, sir. And here I request through you, sir, to the government to honor the act, to implement the act. Sir, where we have to go, sir. And this is after all a number game, sir. We are just 25 in number. That doesn't mean our voice is low. Our voice is loud and clear, sir. But the government should honor the act which is passed in this very house, sir. And I'd like to mention the few of the points which is included in the AP Reorganization Act, sir. Sir, the new railway zone. Sir, the railway zone has to be given to the state of Andhra Pradesh, sir, the South Coastal Zone, which is also included in the act itself. But 9 years happened, nothing is being done, sir. And regarding the Polavaram project, the Honorable Minister rightly here in this house, sir, Gajendra ji, I'm just requesting you, sir, this is almost 9 years happened, and the revised estimation, which is around 55,000 crores, but that was estimated for 2019 and 20. And this year is 2023, sir. But how much the estimates will grow? And
this is all the public money. We are not giving from our pockets. But this escalation will grow on, grow on, and grow on. And we are wasting the money of the public, I guess, sir. Because the project has to get completed. And the last government, sir, I'm clearly stating, the last government has taken the contract of Polavaram project. And what they have did for the Polavaram project, 9 years happened. There was then lapses in the technicality. That diaphragm wall was breached. And up till now, that particular thing is not being addressed. The investigation is going on, and some technicalities is coming into the picture, but nothing has been happening since 1 year, sir. The project is been stalled since 1 year, sir. Kindly, I request the Honorable Minister to make the cognizance of this particular issue, sir. And regarding the major port, sir, I've been talking about the major port, about Dugirajupatnam port, sir, which is included in the act. It is clearly stating that in the year 2018, the first phase of the port works has to be get completed. But nothing has been started up till now. Why is this stepmotherly treatment to Andhra Pradesh, sir? Sir, due to some technicalities that they have shifted to Ramayapatnam port, but still the works has to be get started, sir. And regarding the Kadapa steel plant, and our voice, sir, the Kadapa steel plant, always the Honorable Chief Minister comes to the Prime Minister and the Honorable Home Minister. We've been asking for the funds for the allocation of Kadapa steel plant also, sir. And we talk about the major rail projects, sir, especially the metro projects for Visakhapatnam and Vijayawada. So what happened to all these projects, sir? How can we compete with Bombay? How can we compete with Bangalore, Hyderabad, and Chennai, sir? Sir, we are having the biggest cities is like Visakhapatnam and Vijayawada, sir. And of course, my constituency, Rajahmundry also. So I request through you to the Honorable Minister and the government to sanction the railway project, the metro railway projects to Andhra Pradesh, sir. Sir, coming to the Greenfield crude oil refinery and petrochemical complex, this is also mandated to establish in Andhra Pradesh, sir. Sir, as we all know, perhaps the country must be knowing about the KG Basin. The KG Basin is located in the area of East and West Godavari's and the Krishna district, sir. Sir, you are taking out the oil and diverting to the Gujarat or any other places. So why can't we have the petrochemical complexes in the state of Andhra Pradesh? And how much the cost effective is been happening to the country? But the government of India, for erecting these petrochemical complexes, the government of India is asking for the viability gap funding, which was not mandated in the act, sir. Sir, I would like to reiterate to this house, why not the petrochemical factories, complexes are there at Daheja in Gujarat and Pardeep in Odisha. Did you ask for this viability gap fund in that particular area, sir? Perhaps I don't think you have asked for the viability gap funding. Therefore, I request the Honorable Finance Minister to allocate funds for this petrochemical complexes, sir. Sir, coming to the national picture as a whole, I appreciate the Honorable Finance Minister for delivering expansive budget amid the global economic turmoil, sir. It is good that she has opened the strings and pleased the taxpayers, especially in the view of the upcoming 9-state elections, sir. However, financing the physical deficit is challenging, sir. Sir, look at the receipts and the expenditure. So where the government of India could manage to get 17.5 lakh crores, sir. It is a physical deficit, sir. It is very challenging. Sir, the House would be very happy if the Finance Minister explains and elaborates the roadmap where these golden eggs are going to invest and how can this golden eggs hatch to become the golden goose, sir. Sir, my suggestions here to the government is primarily, apparently, we need to understand our strengths, sir. Sir, our Honorable Prime Minister always says, buy local, Atmanirbhar Bharat. Sir, we all know that the government, how come the public
uses this nationalism. So we are talking about the Atmanirbhar Bharat, sir. But the government should show the sources to portray this nationalism, sir. Sir, in this context, I would like to give a suggestion. This is open the local marts for the groceries, for everything, sir. Open the local marts, name it as a Bharat Mart or whatever it is. But this local marts has to open across the country in small villages also, from the length and breadth of the country, sir. And the only products which is available in that local mart should be made in India. And the local promotion should be happened, sir. In turn, the government should encourage with incentives. The government should encourage with the tax benefits, sir. So definitely, I think this model will completely will achieve the dream of the Prime Minister, sir. And coming to the imports, sir, as we all know that imports, the crude oil is the maximum imports what we've been importing to our country, sir. So the alternative for this, the government is in this budget happened to allocate some 33,000 crores in the green energy and 17,000 crores in the renewable energy. Sir, in the state of Andhra Pradesh, we are encouraging the pump storage, which is the hybrid model, which is trending now, sir. The Honorable Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy ji, has also inaugurated 5,000 megawatt of this pump storage model, sir. So perhaps the country should think on this grounds and to extend across the country, so that at least by this year, if we can curtail to 20% of the crude oil imports, that will be a very good move, sir. And the second, the biggest import, what we import is very lucrative gold, sir. So I wanted to be very clear. So whether I could speak this, whether I could announce this, but still I'm going forward, sir. Sir, increase of the export duty in the gold. However, apparently the number 2 gold, which comes from the borders or which comes from some other countries, and the currency which is lying, the 2,000 rupees notes, which is lying with the big tycoons, will come into the circulation, sir, and allow it. And after coming all these 2,000 notes into the circulation and curtail and seize the routes of smuggling, sir. This is a win-win situation, sir. Almost, I think after the demonetization, we hardly see the 2,000 rupees notes now, sir. Sir, it is laudable that Government of India has done outstanding works in terms of road networking, sir. I should appreciate Nitin Gadkari ji for this. He also visited my constituency. And from this past 9 years, the Government of India is doing a phenomenal job in terms of the road networking, sir. Sir, the industrial corridors, sir. So the government has to be very aggressive in promoting the industrial corridor from north to south and east to west, sir. Sir, here I would like to quote Swami Vivekananda ji. As rightly said, sir, youth is the foundation of the country. And they are the great asset to any nation, sir. They are with full of energy, enthusiasm, and innovative ideas, sir. Sir, he called channelizing the energy into the right direction. They can drive the country on the path of progress. Sir, the youth in the country is the great asset for India, sir. Almost 50% of the population is youth, sir. Sir, likewise, in this house also, we are not less than 70 to 80 members of youth parliamentarians, sir. Sir, my request here is to create a parliamentarian groups and send them across the globe, sir, for the study tours along with the scientific researchers, sir. Sir, we are ready for the nation building, sir. Sir, I would like to mention Taiwan is very famous in manufacturing semiconductors. It almost produces 50% of the global demand. Why not India, sir? Why not India? And I'd like to quote the Singapore, sir. Singapore is famous in electronics, logistics, transportation, and even biomedicines. Why not India, sir? Sir, the floriculture, agriculture, and
the horticulture. So why can't the government will come up with the latest technology, sir? And when it comes to the floriculture, Amsterdam and Vietnam and Thailand is doing very well in terms of the agriculture and the horticulture, sir. The electronics in Japan. And why not all this in India? So we are not short of any competence, sir. We can move the world. But at the same time, constructing this industrial corridor, creating SEZs, creating MSMEs, creating small scale industries, it will create, it will generate, it will accelerate the flow of money, sir. Sir, one thing everybody should remind, that our strength, we need to identify what are our strengths. We have a vast coastline. It is almost thousands of kilometers, sir. Sir, the marine products, the exports are really, really high, sir. So why can't the government concentrate? Of course, the government has allocated 6,000 and odd crores in PM Matsya Sampada, but still it is not enough. Sir, even Vietnam, even the Singapore and the nearby country, Bangladesh is doing very well in terms of aquaculture, sir. We need to promote more, sir. In my state of Andhra Pradesh, under my leader, pragmatic leader, Y.S. Jagan Mohan Reddy ji, we are constructing 9 fishing harbors without any the support of Government of India. So kindly consider this suggestion also, sir. Sir, finally, I wanted to reiterate to this government. Sir, if you look at the breakups in sector-wise, 46% of the population are under agriculture, sir. Sir, how much the contribution of GDP through agriculture is just 20%. Sir, just because of lack of technology, just because of the promotion from the government, the farmers has to understand, the government should push the farmers to inculcate the new technology, sir. Sir, see Vietnam, how best they are doing. Get the scientific scientists or trainers from the different places of the world and train our farmers. Definitely we could contribute more, sir. Sir, every youngster should feel that I can do agriculture when I become elder. But none of the youth in the country are ready to do the agriculture, sir. This is the fate of the country. And the second thing is 32% of population dependent on service sector, sir, and contributing phenomenal and extraordinary. The highest is 54% of our GDP, sir. And 21% of the people are dependent on industry, sir. Sir, contributing 26% of the GDP, sir. And it has to be also improved, sir. Sir, with these suggestions, with these points, I'd like to conclude. Before concluding, sir, with the folded hands, sir, from the people of Andhra Pradesh and on behalf of my Chief Minister, I request Government of India to grant us special category status, honor the act. Sir, we are like a small baby, sir. I request the Government of India to care us, nurture us with empathy, and with just a father figure is there in front of us, sir. But why the government is not honoring the act, sir? Why the government is not implementing the act, sir? Sir, with these words, I conclude. Definitely, the God is there, sir. God is watching everything. Definitely, Well the said, good days well will come to the state of Andhra Pradesh. Thank you so much, श्री sir. सौगत राय जी। सौगत राय जी, अच्छा नहीं बोलना चाहते क्या? Sir, I rise to speak on the budget discussions. It is very unfortunate that yesterday also budget discussions took place. Today it is taking place. The finance minister has not been present on either occasion. The budget discussions belong to the Lok Sabha. Rajya Sabha has no power. I understand the finance minister is from the Rajya Sabha. Why isn't she there either of the day? What is he talking about? आज प्रधानमंत्री जी का डे है वहाँ क्वेश्चन का, प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, इसलिए जितने भी मेंबर जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो वहाँ प्रेजेंट हैं क्वेश्चन डे के कारण वो आ रहे हैं। वो दोनों आप ये बताओ, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, ये मत कहो जवाब। On behalf of finance minister, I am sitting here. She is in Rajya Sabha. Honorable Prime Minister is there.
includes in शुरुआत the में भी ministers. नहीं रहते हैं. दूसरी बात है सर, the other minister, railway minister, whose budget also comes up on this, he is also not there. These are all big people. They don't care. Otherwise, Lok Sabha has full power as far as budgets are concerned. दोनों नहीं है. ये मजाक है क्या? नहीं. Railway minister should be present to listen to our objections. Sir, I speak on the budget discussion. Before I go to my main demands, I want to mention 2 points regarding our state of West Bengal. The West Bengal has been deprived of its share of NREGS funds. 7,300 crores are spending from the center. Along with Sudip Bandyopadhyay, we all went and met the rural development minister. Our local minister went and met him. He said everything is all right. Still money is not being released. He also belonged to a rural area. Just imagine the situation in the rural economy. If total NREGS funds are stopped, people will be starving. And this is... माननीय सदस्य, या तो आप गोली को रख दो, जो हाथ में गोली फाड़ी है ना आपने. नहीं, ये तो हाँ, एलेक्स है. एलेक्स है. ठीक रखने. गला ठीक रखने. अलग पानी देता हूँ आपको ना, गर्म पानी. प्रधानमंत्री जी के तरह वो तो पानी पीते हैं, मैं एलेक्स खाता हूँ. गर्म पानी. हाँ. ऐसे गैलेक्स खाना, गोली खाना सदन में अलाउ नहीं है. सर, मैं... This is for the health, sir. For health. Now, I demand that the money for NREGS for West Bengal should be released immediately. And the government should give up its cruel attitude. Number 2, I have to speak something about railways. The finance minister made a big hue and cry that he has given 11,000 crores to West Bengal for unfinished projects. But nothing is finishing. He will earn name as a railway minister who's very smart. He is starting Vande Bharat trains so that PM can go and inaugurate. These have no long-term benefits. And in West Calcutta metro system, he is inaugurating truncated lines. That is, there is a line from Behala to Bibadibag. He goes 1/3 and inaugurates up to Joka to Taratala. So I demand that whatever railway projects he is doing, let him complete them instead of inaugurating truncated lines. Sir, I wanted to speak on the budget. Nirmala Sitharaman herself called her budget beautifully balanced. I've never heard a finance minister praise her own budget. She is saying India said to be $5 trillion economy, budget beautifully balanced. I'll talk about the balance later. But it's unfortunate that the finance minister budget speech does not mention the words unemployment, poverty, inequality, inflation, or equity anywhere in the speech. So even if it is beautifully balanced, it is that of an accountant. This budget has no vision about the future, and it is not futuristic, but opportunistic, anti-people and anti-poor. This is what Mamata Banerjee said about the budget. Sir, unfortunately, as soon as the finance minister presented his budget, the next day, an avalanche took place. Avalanche of what? Hindenburg research report. One short-selling firm from America, they released a report about a company in India. I will not name the name.
Sir, when we were small, after sunset, we could not use the word sap. My mother used to say, don't say sap, say lata, lata. So now there is a new word. We cannot mention somebody's name. We have to a company, this company. But this company is everything. We can't mention the name. Just like my mother told me when I was young, living in a village. Snake we could not mention. You have become the new spokesman for the ruling party to prevent the opposition protest. You have become the new spokesman after being dropped from the ministry. You have started explaining everything. Go back to the ministry. अरे That आप is इधर बात the करा new करो। way. आप बात है ना माननीय सदस्य Sir, इधर करा करो, कोई नियम हो तो इधर बताओ, उनको क्यों नियम बता रहे हो Some भाई? professional hecklers have sprung up. Their job is to disturb the opposition whenever they speak. Right. I cannot take concern about them. Now, sir, I'll be very brief on this matter. I have other things to speak about. The Hindenburg research report said that a certain company did round tripping of its finances and they bought up assets in India after round tripping them from abroad. After that, an avalanche. You know, in the snowy areas, the ice comes down. The ice came down on this company's shares. In 3 days, it lost 10 lakh crores of rupees. Now, if ये कौन सी कंपनी आप लोग बताओ, इसका नाम तो नहीं किया जाए, सांप है. तो अरे हमारा कोई डर नहीं है, अदानी बोलने से ये लोग बोलेगा काट दीजिए, उनका नाम नहीं करना चाहिए, ये सांप है. तो सर, I have a simple demand before the finance minister. She has got the SEBI under. If a company has done round tripping, it is the job of SEBI to look into it. I demand that she ask the SEBI to inquire into fallen shares of this certain company. Also, the Enforcement Directorate, ED, matter of fear for the opposition, is also under the finance minister. They are investigating each and every opposition politician. Why the ED is not investigating the affairs of this company? This is. He is not in opposition. Yes, very right. Lalanji is first-class leader from Bihar, president of the JDU. He is supporting me, and I thank him for the same. So now, I'll call this budget basically an anti-farmer, anti-poor, anti-rural areas budget. You know what they've done? They've reduced allocation for MG NREGA. क्या है? क्या? तुम्हारा डिवोर्स हो गया? आप माननीय सदस्य डिस्टर्ब. हाँ. अच्छा, ठीक है. Sir, there has been reduction in the allocation of MG NREGA and cut in food, fertilizer and petroleum subsidies. This is anti-poor. Sir, you will know that food subsidy has been cut from 2.87 lakh. Sir, what is it that I'm saying that is objectionable? Please. This young man is shouting. Please. He's shouting. Please. You put him down, sir. Food subsidy has been cut from rupees 2.87 lakh crores to rupees 1.97 lakh crores. Fertilizer subsidy has been cut from rupees 2.25 lakh crores to 1.75 lakh crores. These cuts will expose Indian farmers to the vagaries of the global market
and render the economics of agriculture even more fragile. This is a very serious matter. This should be looked into. Sir, what were you expecting? I was actually originally thinking of praising the finance minister because she has called herself, the budget is beautifully balanced. So I thought that yes, is balanced, but his balance is that of a accountant. You know, in the finance ministry, there is a deputy secretary who tallies the budget and he ultimately balances both sides. The finance minister has done just that. This was the opportunity when inflation was under control, GDP was rising, current account balance was better, fiscal deficit was under control. This was the time to take a big step forward. What did Abhijit Vinayak Banerjee say at the time of pandemic? He said that give some cash dole in the hands of the poor. The budget does not mention anywhere the word migrant labor, who were the biggest Achilles heel of the Indian economy. People walking hundreds of miles to their destination when the pandemic broke. They have not been mentioned. The top economists of the world wanted them to be given some cash dole, some money. The finance minister did not. The other thing she could have done in a stable economic, macroeconomic situation, she could have reduced the prices of petrol, diesel, and of LPG. Because if you have a little financial space, that is the time to give relief to the common man. She did not do this because she had to balance the budget beautifully. So this budget ultimately turned out to be what? Anti-poor. Anti-poor people. So that is the budget. So now you're talking about digital India. Now digital India is all right. But sir, you must be knowing that technology takes away jobs. Today, all the big tech companies like Microsoft, Meta, Amazon, they are all retrenching people. They are called pink slips in America because technology always relentlessly takes away jobs. So to talk about digital India, Industrial Revolution 4.0, artificial intelligence 3 centers will not solve India's problem. India's basic problems are poverty, destitution, migrant labor, and of course, unemployment. The employment has not been addressed at all. The finance minister will come and say, see, I have increased so much in capex. Capex is what? Capital expenditure. How much she has given? 10 lakh crores. Very big sum. But does the capex get translated into projects anywhere? No. You give the money today, the project will take another 1 year, 2 years to start. What happens in the meantime? And when you are building infrastructure projects, the main problem is that they take a lot of time. Some people get employment during construction. But after construction is over, they lose the jobs. So you are taking India towards a jobless future. From a very favorable situation, you are taking India to a jobless future, Berojgar. I see Mr. Gajendra Singh Shekhawat doing namaskar to me. I like that. He is the favored child. Oh, he did namaskar to you. And Navneet must have been. That would be only more proper.
Sir, there are only two favored children. Who are favored children? One is this Jal Jeevan Mission. Jal Jeevan Mission. They have got 70,000 crores. And the other is PM Awas Yojana. They have got 79,000 crores. But NREG has received a cut. So if you develop only two projects, that will be enough to alleviate India's problems. I do not think so. I think you are making a mistake. सुनिए ना आप जो किए हैं मेरे पास ये है आप क्या क्या किए हैं जो नहीं किया है वो बोलना मेरा काम है जो किया है वो बोलना आपका काम है जो बोला है हाँ दादा आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं आज सुप्रिया जी से गाइड हो रही हैं क्या सब मेरे अच्छे दोस्त हैं ये समझते हैं बुढ़ा आदमी बोल रहा है इसको मदद किया जाए ये सब लोग मदद कर रहे हैं जो किया वो बोलना आपका काम है जो नहीं किया वो मेरा काम सर तुम पूरा पागल है तुम बैठ जाओ तुम्हारे बीबी भाग गया तुम पूरा पागल है ये हटा दिया माननीय स्पीकर साहब दादा को नवनीत जी ने नमस्ते नहीं किया इसलिए उन्होंने सुप्रिया जी का सहारा ले लिया Sir, the other thing is, do you remember? ये प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया फार्मर्स इनकम 2022 में दोगुना हो जाएगा आपको कोटा में भी तो फार्मर है उनका इनकम दोगुना हुआ नहीं हुआ सर they promised that by 2020 everybody will have a house everybody कहाँ सब लोग का घर हुआ आप बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर स्वरोजगार योजना उसमें सब लोग का घर मिल जाएगा घर नहीं मिला सर ये जुमला का सरकार है एक साल एक सवाल उठाते हैं एक साल अच्छा डिवोर्स के बाद इसको दिमाग में गड़बड़ी हो सर सर इसको तार कट गया कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है इसको तार कट गया सर लास्ट ईयर they made a promise asset monetization pipeline that they will get money out of the sir एक सेकंड माननीय सदस्य आप वरिष्ठ हैं किसी भी माननीय सदस्य के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग मत करो आपको वो करेंगे तो उनको भी इसी भाषा में कहूंगा उनका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है नहीं रोक नहीं मैंने कह दिया उनको बैठ जाइए आप बोलिए आपको नहीं अलाउ किया मैंने लास्ट ईयर दे स्पोक ऑफ प्लीज दे स्पोक अबाउट एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इस साल है बजट में नहीं कुछ एसेट मोनेटाइज नहीं हुआ दे यूज्ड टू स्पीक अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट अगले साल भी 50,000 करोड़ था इस साल भी 50,000 करोड़ बजट में कभी कोई आपका एसेट लेने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है योर प्रोग्राम्स आर फेलिंग वन बाय वन अनाउंस निर्मला सीतारमन हैज दिस एडवांटेज शी मेक्स एन अनाउंसमेंट फॉरगेट्स अबाउट इट नेक्स्ट ईयर बट वी कीप लास्ट ईयर्स बजट वी रिमेंबर व्हाट ऑल शी सेड एंड दैट्स व्हाई sir this budget done with good intentions at a time when Indian economy was recovering from the downslide of the COVID missed all the opportunities
It turned out to be, I'll briefly complete my point, sir. बहुत डिस्टर्ब कर दिया, ये तार कट जाता है लोगों को और हमको डिस्टर्ब करता है सर। सर अच्छा, कल अधीर चौधरी गलवान के बारे में बोला कि चाइना कितना पॉइंट गलवान में दखल किया, कितना पॉइंट अरुणाचल में दखल किया। क्या जरूरत था डिफेंस बजट बढ़ाने का? कहां बढ़ा? 1.5%. It has remained almost the same if you take in inflation. अभी तक छत्तीसगढ़ में माओवादी लोगों को मार रहा है, एक बीजेपी को आदमी को मार दिया परसों। कहां सीआरपीएफ का अलॉटमेंट? वो भी नहीं बढ़ा, 1.5%। ये लोग बोलता है हेल्थ और एजुकेशन में पैसा देगा, एजुकेशन में केवल 2.9% सारा बजट का अलॉटमेंट एजुकेशन के लिए। हेल्थ का इतना प्रॉब्लम है, वहां भी कोई अलॉटमेंट नहीं है। उनका तार कट गया सर। सर lastly I want to say that giving allocation is not enough. In our country, you have to see that on the ground, projects are implemented. Government has spent 22,000 crore less of what it had allocated for capital expenditure this fiscal. Allocating money is not equal to spending money, nor is allocating money equal to creating jobs. They have mentioned all तार काटा हुआ प्रोग्राम ये दिया है। सर आप सुनिए, सर आप सुनिए, कुछ प्रोजेक्ट का मेंशन किया, ये कुछ प्रोजेक्ट का मेंशन किया। आप ये प्रोजेक्ट, इसमें एक पैसा भी नहीं दिया गया सर। क्या भाई, क्या प्लीज मानिए। सर ये क्या हो रहा है, ये एक तो प्रॉब्लम होगा। अभी भी हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी एंड एफडीआई, they constitute 40%. Since last year, FDI is escaping from the economy. You find out how much FDI money has gone out. Private investment is being squeezed out because the government is doing huge borrowings. So the private sector is not being able to mop up resources. So this point that I'm giving everything to capex, I'm creating a deficit financing that creates a problem. ये देखिए अनाउंसमेंट किया कुछ प्रोजेक्ट का, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, पीएम प्रणाम, गोबर धन, खेती, नेचुरल खेती, बायो इनपुट, मिष्टी, ये मैनग्रोव के लिए है, अच्छा है, अमृत धरोहर, इवन मिलेट्स। सर एक पैसा भी अलॉट नहीं किया, केवल फिनांस मिनिस्टर ये बजट स्पीच में अनाउंसमेंट किया, बजट पेपर्स में इसका कोई मेंशन नहीं है। पीएम प्रणाम, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, गोवर्धन, नेचुरल खेती। और ये नेचुरल खेती क्या होता है सर? इसका कोई, आप गोवर्धन के पक्ष में है? कि गोवर्धन, बिल्कुल गोवर्धन योजना इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, और उसके लिए जो है 7,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन नहीं, you show me the budget papers. I am carrying all the budget papers. आप दिखाओ कहाँ allocation. I am carrying the budget papers. So these are all announcements without any meaning. So this is all cheating, fuzzling, befuddling. हाँ, ये सब वैलेंटाइंस डे प्रेजेंट है। सर लास्टली आई वांट टू से दैट आप देखिए, एक तो बजट पेपर में
एक तो अच्छा पिक्चर है। हमारा रुपया कहाँ से आता है? हमारा रुपया इनकम टैक्स 15%, एक्साइज ड्यूटी 7%, कॉर्पोरेशन टैक्स 15%, जीएसटी 17%। तो आप इनकम टैक्स आप छूट दिया कितना? 0.1%। 38,000 करोड़ रुपया हमारा इनकम टैक्स टोटल, हमारा कलेक्शन जो है 25 लाख करोड़, उसका 1% है। ये कोई छूट नहीं है। और आप क्यों बड़े लोगों को सरचार्ज पर छूट दिया? वो देना नहीं चाहिए था, गलत किया। ये बजट इस टिंकरिंग, एक गवर्नमेंट 2 साल पहले एक तो अटल टिंकरिंग लैब शुरू किया, उसमें थोड़ा सा इधर उधर करता है। ये भी बजट इकोनॉमी को लेकर टिंकरिंग किया। और देखिए, डिफेंस इज ओनली 8%, सब्सिडीज कम करके 7% कर दिया, स्टेट शेयर 18%। एक ही अच्छा काम हुआ, 50 साल के लिए स्टेट्स को 1 लाख करोड़ रुपया लोन दिया बिना इंटरेस्ट में। अच्छा है। स्टेट को 3.5% फिस्कल डेफिसिट अलाउ किया, ठीक है। लेकिन ये है समय जब इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है। यही समय था टू मेक ए फ्रंटल अटैक ऑन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी अगर स्टेबल है तो आप गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाओ, अपना दल भी स्ट्रांग होगा। आप भी करो अनुप्रिया जी, ये उसका ये मत रहो। पैसा सर, ये जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है, ये देश को लूटेगा, ये कुछ नहीं करेगा सर। आप और हमको गरीब के साथ रह के लड़ाई लड़ना है। और इसलिए मैं ये बजट प्रस्ताव को समर्थन नहीं पा रहा हूं। मैं फिर मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल का एनआरईजीए का रुपया अभी देना चाहिए, और पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना के रुपया अभी देना चाहिए। और रेलवे मिनिस्टर कलकत्ता जाए और हमारा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को इनागुरेट करे। मैं बहुत आभारी हूं कि आप धीरज के साथ मेरे भाषण सुने। मैं आपको नमस्कार। श्री वंगप्पा बढ़ने, किसको बुलाना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी पार्टी की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उस पर मेरी बात रख रहा हूं। यह बजट भारत की आजादी के 75 साल होने पर अमृत काल का पहला बजट है। यह बजट महत्वाकांक्षी और समावेशिता पर केंद्रित है, जहां विकास का लाभ किसानों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती यदि सभी नागरिकों को तक पहुंचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लक्षित लाभों के सार्वभौमिकरण के साथ ही कई योजना और प्रभावी ढंग से लागू किए योजना का परिणाम स्वरूप समावेश यह बजट है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू टॉयलेट का निर्माण किया गया है। आज दुनिया में भारत को एक उज्जवल सितारे के रूप में मान्यता दी है। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी
अंत्योदय को प्राथमिकता दी है और परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है, जिसका 2 लाख करोड़ पूरा खर्च केंद्र सरकार करेगी। यह गरीबों के हित के लिए उठाया एक क्रांतिकारी कदम है। अध्यक्ष जी, इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66% बढ़ा दिया है। सरकार का यह कदम स्वागत है। अध्यक्ष जी, इस बजट में एमएसएमई पर खास ध्यान दिया गया है, जैसे कि उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और 80 पोर्टल को वापस में जोड़ा गया है। 130 लाख एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी की योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय करीब दुगनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में बन गई। देश करीब 2 साल तक कोरोना से लड़ा। देश करीब 2 साल कोरोना से लड़ा था, लेकिन मोदी सरकार ने देश के आम आदमी के हित में ध्यान देते हुए जनहित के फैसले लिए और इनका लाभ देश के सभी जनता को हुआ है। आज देश दिन तक 102 करोड़ लोगों को लक्षित किए हुए कोविड विरोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार हुआ है। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के जुड़े लोगों को बधाई देना चाहिए। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए नगद हस्तांतरण किया है। देश का किसान सभी और खुशहाल हुए। माननीय मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन के तहत करीबन 70,000 करोड़ सभी राज्यों को दिया है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाके में पानी की योजना होते हुए कई सारे ग्रामीण इलाकों को इसका लाभ पहुंचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पीएम गति शक्ति को बढ़ाने देने वाली 7 कारक सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक, ये इस पर ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष जी, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्माण, बहुपक्षीय कन्वर्टिंग और लॉजिस्टिक के दायरे में आए। राष्ट्रीय अवचरण पाइप लाइन में 7 कारकों की जुड़े इस परियोजना का लाभ सब देशवासियों को हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेटवर्क में 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्किंग में विस्तार करीबन करने के लिए 20,000 रुपए जुटाए जाएंगे। इसमें देश का चौमुखी विकास होगा। अध्यक्ष जी, एक समय इस देश में आधारभूत सुविधाएं में कमी होती थी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का कमी होती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए सरकार में ये यशस्वी कदम उठा। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस निर्माण में गति दी और माननीय नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में आज देश में सीमाओं तक वर्ल्ड क्लास सड़कों का निर्माण हुआ है। एक समय था कि देश में सीमाओं पर सड़क का निर्माण नहीं था।
आज यह सरकार द्वारा यह मानांकन बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 8 वर्षों में राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई में करीब 50% वृद्धि हुई है। अप्रैल 2014 में राज्यमार्ग की लंबाई 91.287 किलोमीटर बढ़कर 2021-22 में 1,40,995 किलोमीटर हो गई। कुल बजटीय करीबन 5.5 गुना वृद्धि हुई है। आज भारतीय राजमार्गों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ये सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ये माननीय नितिन जी गडकरी ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा देश में आज मेट्रो रेल का जाल बिछा रहा है। यह बजट में पिछले बजट की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक साथ जब रेल कोच का आयात करते थे, लेकिन आज हम वर्ल्ड क्लास कोचिंग का निर्माण देश में करते। अध्यक्ष जी, मोदी के नेतृत्व में देश अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण देश में करेगी। साथ ही अगले 3 साल के दौरान नई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे से लोनावाड़ा तक लोकल सेवा चालू करने के बारे में लगातार यह बात रखता हूं। केंद्र सरकार द्वारा इसमें जल्दी से जल्दी अगर सहायता देगी तो निश्चित रूप से यह मार्ग भी बनेगा। दूसरा, कर्जत से पनवेल और पनवेल से उरण तक का मार्ग धीमे गति से चल रहा है, तो ये मार्ग पर रेल विभाग द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान कुछ जरूरी मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। देश में रिटायर कर्मचारियों की संख्या करोड़ों में, सरकार की और उन को दी गई राहत प्रदान नहीं की जाती है। सरकार पेंशन राशि पर इनकम टैक्स वसूल करती है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 के बजट में घोषणा में वरिष्ठ नागरिकों की बचत लिमिट को 1 लाख से 5 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख किया है, जिसका मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। परंतु इस बचत पर कमाए ब्याज पर जो टैक्स देना होता है, उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। पिछले बजट में 75 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक को ITR दाखिल करने पर एग्जेंस किया है, पर उनकी ब्याज में कई कमाई पर TDS कट नहीं लेगी। जब ITR भरने पर TDS कैसे वापसी मिलेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, 70 साल के आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक मेडिकल बीमा के लिए पात्र नहीं है। इसमें सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट गए 9 साल का कार्यकाल का माननीय मोदी जी के बजट का एक सर्वोत्तम बजट है। इसमें सभी लोगों पर ध्यान दिया है, जैसे कि गरीब हो, किसान हो, कर्मचारी हो, इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। एक अच्छा और सराहना बजट पेश किया है। माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं। एक अच्छा बजट यहाँ पेश हुआ, उसका स्वागत भी करता हूं। श्री महाबली सिंह जी। सभापति महोदय, केंद्रीय बजट 2023-24
जो सदन में चर्चा के लिए, सामान्य चर्चा के लिए लाया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, जब भी सदन में बजट पर चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष के लोग जो हैं बजट की सराहना करते हैं। हमेशा आजादी के 75 साल हो रहे हैं, इन 75 सालों में जो भी सरकार बजट बनाई, सभी सरकारें दलित, पिछड़े, अकलियत, किसान, मजदूर के हित में कह करके लोगों ने बजट बनाई। लेकिन सरकारें बदलती रही, बजट बनते रहे और बिगड़ते रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तस्वीर आज तक नहीं बदली, आज तक नहीं बदली। आज भी करोड़ों लोग, आज भी करोड़ों लोग गंदे नाले और पेड़ों के नीचे जन्म लेते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, वहीं पर आज भी मर जाते हैं। इसलिए महोदय, हमें इसके तरफ नहीं जाना है, लेकिन हमें सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि बड़ी अरमानों से बिहार की 13 करोड़ जनता ने आपको 2019 में 40 सीट में से 39 सीट एनडीए के खाते में डालने का काम किया था। लेकिन 40 सीट में से 39 सीटें 40 बहुत आशा, उम्मीद और अरमान के साथ इस बजट पर निगाहें रखी थी बिहार की जनता। उसको विश्वास था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस बजट में जरूर प्रदान किया जाएगा, क्योंकि यह मांग जब बिहार में गठबंधन हम लोगों के एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार थी, उस समय विधान परिषद से लेकर विधानसभा तक सब लोगों ने पारित करके भेजा था केंद्र को कि हमको बिहार की विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो केंद्र सरकार ने उस समय वादा किया था कि बिहार को हम लोग विशेष पैकेज दे करके विकसित राज्यों को श्रेणी में लाने का काम करेंगे। न तो बिहार को विशेष राज्य का आप दर्जा दिए, न बिहार को कोई पैकेज दिए। झूठ नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपने बिहार को कौन सा पैकेज इस बजट में दिया है? कहाँ है? जरा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ आपने विशेष पैकेज दिया है। न बिहार को विशेष पैकेज ही हुजूर दिए। सर यहाँ तक कि देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये पवित्र मंदिर है। प्लीज इस मंदिर में हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ से जो भी घोषणाएं होती है जमीन पर उतरना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए। 2000 बिहार के अंदर 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री ने बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। उस समय 3,500 की, आज 3,500 करोड़ की वो योजना हो गई। लेकिन शिलान्यास होने के बाद आज 14 साल बीत गए, आज तक वह बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का काम जमीन पर नहीं उतरा। अब बताइए महोदय कि हम लोग यहाँ सदन में चर्चा करते हैं, बिहार की जनता पटना से लेकर दिल्ली तक धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते आ रही, और वह 4 पार्लियामेंट का क्षेत्र था। सभी माननीय सदस्य जो आज बोल रहे हैं, हमारे राम कृपाल जी, इन्होंने भी कई बार रेलवे मंत्री से मिला, हम लोगों ने मिला,
अब 13 साल से बताइए महाराज कि 4 पार्लियामेंट का वो क्षेत्र है, एक छोटा सा, आज रेलवे लाइन नहीं बन सका। डालमिया नगर 7 में, रोहतास के डालमिया नगर, टिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को 7 में उसका शिलान्यास हुआ था, तत्कालीन रेल मंत्री ने किया था, रेलवे वैगन बनाने के फैक्ट्री के लिए। अब बताइए 13-14 साल हो गया महाराज, 14 साल से विगत जो तत्कालीन आपके रेलवे मंत्री अभी थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने सदन में वहीं से कहा था कि 2022 तक हम लोग हर हालत में टिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को, जनता के हाथों में रेलवे फैक्ट्री को हम लोग चालू करके देंगे। बताइए आज तक कुछ जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन आज तक वो 7 में शिलान्यास हुआ, आज तक वो भी काम नहीं हुआ। आप खाली देखिए आश्वासन और झूठ के सहारा लेते हैं, झूठ से काम नहीं चलेगा। बिहार को बिना विकसित किए हुए आप देश को विकसित नहीं कर सकते। बिहार महात्मा बुद्ध की धरती, जहां से विश्व को संदेश देने का काम किया, वो महावीर की धरती है। और वैसे धरती को आप उपेक्षा करके, उसको अनदेखी करके, उसको अरमानों पर पानी फेर करके आप देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है महोदय? एक बात हम कहना चाहेंगे महोदय कि हमारी जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रपति महोदया ने जो भाषण दिया है और उसने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास, और आपने कहा सबका प्रयास। हम मानते हैं आप कैसे सबका साथ ले सकते हैं, आप सबका प्रयास कैसे ले सकते हैं। आज आप 75 सालों में अमृतसर महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत का महोत्सव मना रहे हैं, और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है वो आज भी अपमानों का जहर पी करके इस देश में जिंदा है। आप कुछ लोग अमृत को वोट से लगा लिए, आप अमर हो गए, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा जो समाज है आज 75 वर्षों में आजादी के आज भी अपमान का जहर का घूंट पी करके जी रहा है। आप सबका प्रयास की बात करते हैं, सबको विश्वास लेने की बात करते हैं। ये कैसे विश्वास आपको मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? सबका प्रयास कैसे आपके साथ हो सकता है? इसके लिए सभापति महोदय, हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, देश के आजादी में इस देश के सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस देश का दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोगों ने इस देश की आजादी में कुर्बानी दिया है। और सब लोगों का ये अधिकार है इस देश के मिट्टी में, इस देश के हवा में, इस देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, सब लोगों का अधिकार है। सब लोगों को जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा तो कहिएगा कि सबका हमको प्रयास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए। एक तरफ देश के अंदर कोई हेलीकॉप्टर से जाकर के शादी विवाह अपनी बहू बेटियों का करता है, और इस देश के अंदर दलित, आज भी दलित जो है घोड़ा पर चढ़कर अगर शादी करने जाता है तो उसको आप उतार देते हैं और कहते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक उपाय है सभापति महोदय,
अगर हमारी केंद्र सरकार अगर चाहती है कि सबका प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ सबका जाइए। अगर प्रयास आपका जब अवसर है तब बोलिएगा। तो एक ही उपाय है महोदय, कि जो इस देश में सामाजिक जो व्यवस्था है, यह गैर बराबरी व्यवस्था है। और यह व्यवस्था, जैसे आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा, इस देश में जाति कोई भगवान ने नहीं बनाई है, आदमी ने बनाया है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहते हैं, इस देश को विश्व में सबसे महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो एक काम तो देखिए करना होगा। एक काम क्या करना होगा कि या तो जो लोग गैर बराबरी व्यवस्था के तहत जो लोग नीचे गिराए गए हैं जात पात के नाम पर, उन लोगों को आपको ऊपर उठाना होगा। और उनको ऊपर उठाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश के सीमा में जितने रेजिमेंट हैं, उसमें सब लोगों को भागीदारी देना होगा। सब लोगों को भागीदारी देना होगा। अगर आप भागीदारी देना चाहते हैं तो उसके लिए एक काम और करना होगा। अब समाप्त कीजिए जी। अरे महोदय, हमारा 20 मिनट का टाइम है। और भी वक्ता है आपके दल के, 20 मिनट प्लीज। का समय है महोदय, आपके दल के और भी मान्य सदस्य हैं, इसलिए महोदय आपको सबको जब हिस्सेदारी देना होगा, तब इस समाज में शांति व्यवस्था कायम होगी और सब लोगों के अंदर देश के प्रति ममता होगा। तो इसलिए उसके लिए एक काम करना है कि देश के अंदर आप जातीय जनगणना कराइए। देश के अंदर जातीय जनगणना कराइए। जब इस देश का, जब जानवर की गिनती हो सकती है, इस देश में शेर, भालू, चीता, भेड़िया की गिनती हो सकती है, उसकी जनगणना हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, तो तब मानव की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? और जब तक जनगणना नहीं होगा, तब तक ये पता नहीं चलेगा सभापति महोदय कि कौन जाति की इस देश में कितनी संख्या है। और जब तक संख्या उनकी गिनती नहीं होगी, तो उनको हिस्सेदारी और भागीदारी ये सरकार कैसे दे सकती है? तो इसलिए जातीय जनगणना कराना जरूरी है, ताकि जब बात उठती है हक की, हिस्सेदारी की, इस देश में आरक्षण की बात उठती है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई है कि कौन सी जाति की कितना आबादी है, तो हम उनको आरक्षण कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहती है कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। जब इस देश के अंदर, जब अगर विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, तो जातीय जनगणना कराइए और जो जितनी जातियां, जिनकी आबादी है, उस हिसाब से उनको भागीदारी दीजिए, विकसित राष्ट्र बन सकता है महोदय। इसलिए महोदय, हम इस समान चर्चा पर एक बात सदन के माध्यम से सरकार से, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर। जी बैठिए, हो गया आपका विषय, हो गया। प्लीज जी मेहताब साहब। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर। द बजट कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, प्लीज बैठ जाइए, रिपोर्ट जी आदरणीय मेहताब साहब। It basically reflects the plan and program of the country and of the nation. So when something is said that it is only an accountant's job
I don't believe in that type of comment. There have been umpteen reasons to be apprehensive in 2023, more so while waiting for the budget. US Federal Reserve's unbridled aggression, rising cost Ukraine and Russia, and China's COVID crisis, to name a few. Yet in the backdrop of like this government has decided to go bold and big on capex and chosen consistency in a world characterized by randomness and volatility. The Prime Minister has outlined the period from 2022 to 2047 as the period of Amrit Kal. It is a vision to make India a developed country during this golden phase. To realize this, India needs to rapidly invest in social infrastructure. This investment would need to come from taxpayers' money and not borrowings. India's tax to GDP ratio is still below the critical mark of 15%. India's gross tax to GDP, which was 11% in financial year 2019, fell to 9.9% in financial year 20 and marginally improved to 10.2% in financial year 21-22. This is much lower when we compare ourselves with the emerging market economy, which is average of 21, and OECD, the average is 34%. Today, the country boasts more than 4.3 million crorepati's households, equivalent to 23 million consumers. They are spread all over the country. By 2047, if political and economic reforms have their desired effect, India has the potential to become the fastest growing economy in the world. This growth will not only make the Indian middle class the biggest income group in the country, but it will set to be major driver of economic, political, and social growth. Finance Minister's full-fledged budget before next year's general election can be commended on many counts. I mention only three. For staying the course on fiscal consolidation, changing the composition of government expenditure in favor of capital as against revenue spending, and third, welcome move relating to personal income taxation. In turbulent time like this, a good budget can only be said is just a good beginning. The turmoil in the global economy is likely to continue as the impact of higher interest rates shows up in weaker demand for consumption and investment. Geopolitical tensions continue to disrupt every supplies and trade as the resilience of the domestic economy gets tested by global headwinds. Deft fiscal maneuvers is necessary, like they were this year. Now, coming to the basics, sir, there is need for some answers. PM Kisan allocation is 13.33% lower as compared to budgetary estimate of rupees 68,000 crores made in 22-23. The revised estimate of 22-23 was reduced to 60,000 crores, no doubt, but in 21-22, an actual expenditure was rupees 68,825 crore, which was incurred on the PM Kisan. The figure is there for all of us to see. Should we believe that people have moved from farming to some other avenues for better? Or should we believe that they have been pauperized and have become daily wage earners? On MGNREGA, this generated an all-time high, 389 crore person days of employment in 21-22.
363 crores in 21-22. Even this fiscal project is 290 to 300% days will exceed the 265 crore plus generated in 29-20 and 2018 and 19. It is a demand-driven scheme. Whenever we make this point, always it is said it's a demand-driven. But here the figure shows how it has met. The budgeted amount this year is 60,000 crores. The question is, how realistic is the assessment? If the next southwest monsoon is normal and the non-farm economy timely recovers, MGNREGA may not require any additional funding. Till then, do we have to keep our fingers crossed? Coming to free food distribution scheme, and this is a scheme which we have all experienced, moderated income inequality in many states. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana played a key role in keeping extreme poverty in the country at the lowest level. We didn't hear a single death because of hunger, because of this program. IMF report says extreme poverty was at the lowest level of 0.8% during the pandemic hit 2020. SBI study, State Bank of India study, has analyzed that several government transfer payments for the poor are adding rupees 75,000 to a household per annum. But I would like to draw the attention of the government to the design flaw, as ration records have not been updated since 2011 onwards. More than 40% of India's population is currently excluded from National Food Security Act. 40%. In many villages and slums, the most marginalized castes and communities are often without NFSA ration cards. However, states like Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan, West Bengal, and Chhattisgarh have either universalized or substantially expanded coverage with state cards. Sir, here I would like to remind the government about the Supreme Court judgment of last August, that is 2022, which had directed the Union government to expand National Food Security Act coverage. Nothing has happened till now. Nothing has happened. And the answer that comes from the government is, let the census be over. Despite Supreme Court's direction, based on population projection, at least 100 million beneficiaries, especially children born in the last decade, are missing from the ration list. Where are they going to be? When are they going to be covered under NFSA? I come to another very important issue, where Odisha has been affected to a very great extent. I'll first put the figure of the budget, where food subsidy in Food Corporation of India under National Food Security Act, the revised estimate of 22-23 was 2,14,596 crores. This budget is 1,37,207 crores. There is a drastic cut. On food subsidy for decentralized procurement of food grains, 72,283 crores, which has come down to 59,793 crores. The government may say, because we have withdrawn Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, there is no need to procure more. And here actually the catch lies. The catch is, Odisha produces more than 72 million tons of
paddy. And we purchase, FCI plus state government purchases the whole amount from the farmers because to help the farmers at the MSP rate. Very few people keep rice for their own consumption. Other than that, the rest is purchased. What will happen there? Now already Odisha government is purchasing, but union government is not purchasing any paddy at all. No rice. Earlier, rice was being moved through Kerala to Tamil Nadu and also to the northeast. Now that is also not being done. Why this type motherly attitude to Odisha? That is the question which I would like to put. With this curtailment of or minimizing the purchase, who are the states which are getting affected? Odisha is the major state which is getting affected. And I would like to say, FCI is not taking parboiled rice. Corporation is not making payments to Odisha, though that is due in there. Sir, this budget is of 45 lakh 397 crores, and which is an increase of 7.5%. That is laudable, as I had said earlier. But what is the position? The position is, as I would say, there is a structural problem with our budget. More than 40% goes for the interest, to cover the interest. 30% goes on salary. So are we correcting it to a certain extent? No, not much. We don't see any light from this budget. And I'm also reminded of another point, sir. You are aware, most of us are also aware. Are we at any point of time talking about Sahara India? 13 crore people had invested in that. What has happened? Doesn't government have any responsibility? We will say it is sub judice, Supreme Court is taking over, SBI is looking after it. But who is caring for these people, 13 crore people who had invested? No, not a single reply is coming from the government. Sir, coming to health issue, I would just deal with investors are 13, large number of people are affected. Sir, in a speech, Finance Minister has announced budget for health, not including research, will be roughly 86,175 crores, and that is 615 rupees for every person, if I calculate it as per our population. This is a 2.7% increase from the previous year and lower than the rate of inflation. In real terms, the health spending has declined. Vaccinating to a single child against all childhood illness in our country costs rupees 1,600. A day of hospitalization in the public hospital is estimated 2,800 rupees. At a private hospital, it is more than 6,800 rupees. Rupee spending on health by the government gives more return than out-of-pocket or private spending by citizens. National Health Mission allocates less than 3%, that is 717 crores of rupees to non-communicable disease. For communicable disease, it is 3 times more, that is 2,178 crores. For reproductive and child health service, it is 9 times more, that is 6,273 crores. There is a need to rebalance, to pay attention to non-communicable diseases. On education, sir, share of education has fallen over the past 7 years, from 10.4% to 9.5%. This is stated in the state's in the economic survey. While expenditure on social service increased from 9 lakh 15,000 crores to 21 lakh 32,000 crores, the share of education has shrunk from 42.8% to 35.5%.
between 2015 and 2022. As a share of the GDP, the budgetary allocation for education saw a minimal gain, that is 0.1 percentage points, from 2.8% to 2.9% during this 7-year period. On taxation, sir, Finance Minister has made 5 announcements to reduce the tax burden. 4 pertain to the new regime. The last one is for exemption on leave encashment. But my question is the new tax regime attractive? Despite government's effort to simplify the tax system, the uptake of this regime is low due to the unavailability of common tax deductions and exemptions. Why should we have to run to the chartered accountant or a lawyer to understand how much tax I have to pay? Can't we make it simple? Even today, with this new tax regime, it is so cumbersome, it is difficult to understand. Very difficult to understand. Coming to the devolution of states, sir, the state share has never been close to 41%, though it has been announced by the Finance Commission, 15 Finance Commission. The state share has never been close to 41% due to cess and surcharge imposed by the Union government. Odisha government, our Chief Minister Naveen Patnaik has been repeatedly writing to the Prime Minister that you share some of this, but that is falling on deaf ears. It keeps major chunk of taxes, and what we have been asking, Odisha is facing natural disaster year after. Our only demand is that you allow, and this we have discussed, the state government also has discussed with the Niti Aayog, with the Prime Minister, that you make Odisha a special focus state. Time is exhausting. For at least 3 years. If a natural disaster hits Odisha, allow or declare it as a special focus state where 90:10, that is the center and state share, for 3 years only, so that we tide over the situation and come up forward. Sir, on railways, I will be failing on my duty if I don't mention 2-3 words, because the rail minister is a member of this house representing our state. We find a significant feature. It has set aside nearly a quarter of its total capex outlay of rupees 10 lakh crores. The budgetary support amounts to 2.4 lakh crores. The goal is to raise the share of rail freight traffic from 27%, road transport is 64%, to 45% by 2030. Freight earnings are 2.5 times the passenger earnings. It is possible to improve on both counts. It's not unachievable. It is possible. The railways must adapt to become a transporter of FMCG, automobiles, and other high-value products for which last mile connect is important. On the passenger side, upper class travel should remain competitive vis-a-vis air and road travel. There is scope to raise both traffic and freight revenues. Despite pensions, can we imagine? Pensions of railway is over 25% of the total operating expenses of the railways. The budget numbers indicate 30,000 crores of rupees has been set aside for doubling of tracks. This was only 9,000 crores in 21-22. 32,000 crores to be spent on new tracks, that is 50% increase in 2 years. 40,000 crores on the rolling stock, which was only 8,000 crore last year. 8,000 crores for electrification. These are big numbers, very big numbers. The obvious question is, from my state point of view, how much is actually percolating to the state of Odisha, which has been denied railway development for last so many years. The obvious question, of course, is whether railway have the capacity for absorption and implementation for this expanded capital. Capital investment in the railway is overdue, no doubt, but it needs financial reforms, administrative reforms, and greater independence. Before concluding, sir, I have a small
demand, as my friend from Kendrapada has just now mentioned. The station is there, tickets are being sold, rail line is there, but it is not functioning. Passenger train should ply on that route. That is necessary. With these words, I conclude. थैंक यू। श्रीमती संगीता आजाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे बजट 23-24 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं आपका और आपके साथ साथ अपनी पार्टी की मुखिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बजट 23-24 के लिए हमारी पार्टी की मुखिया ने कहा है कि देश में पहले भी इस तरह के बजट आते जाते रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही है, किंतु वे सब बेईमानी हो गए। जब भारत का मध्यम वर्ग महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और कोविड के चलते लोअर मिडिल क्लास बन गया। यह बजट भी पिछले वित्तीय वर्षों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। सरकारें अपने पिछले साल की कमियों